सबसे पहले मैं दिव्यांशु जी को आज के सेशन के लिए जो ये बेंगलोर से आए हैं, तो मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूं। दिव्यांशु जी के साथ मेरा संबंध 22 साल पुराना है। जिस समय की मैं मीडिया में था और दिव्यांशु जी अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर इनका रहा है। ये इंटेल के कंट्री हेड रहे हैं, तो उस समय से हम लोगों की जान पहचान है और मैं इनको बहुत बारीकी से देखता रहा हूँ। फिर जब ये अपना स्टार्टअप जर्नी शुरू किए तो भी इनका बहुत पुराना नहीं है स्टार्टअप, बहुत मतलब हमें लगता है भी 1 साल भी नहीं हुआ होगा और ये यहाँ तक पहुंचे। तो हम इनको हमारे यहाँ हम लोग CIMP में भी इनका लाभ उठाते रहे हैं। और जब BHUB के हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके विषय में हमें जहां भी जो भी ऐसा लगता है कि वो कुछ मतलब हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को कुछ ऐसा चीज बता सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में ये हो, तो हम बहुत दिन से जो है दिव्यांशु जी को दिमाग में रख के चल रहे थे। और इनका जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। तो बाकी दिव्यांशु जी हम लोगों के पार्ट हैं, ये बिहार से ही हैं और बहुत मतलब ये डायनामिक इनका जो है काम करने का तरीका है और इनकी पर्सनालिटी है। IIM से तो ये हैं ही, इसके अलावा इनका प्रोफेशनल कैरियर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हमारे यहाँ CIMP में भी ये लगातार जुड़े हुए रहे हैं और ये बिहार के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए ये बहुत पुरजोर काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पे हैं तो हमें दिखता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो करे के बा है, करे के बा के भी ये को-फाउंडर है। तो हम पुनः धन्यवाद देते हुए दिव्यांशु जी को आज का सेशन शुरू करें और BHUB के जितने भी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप जो भी जिस तरह से मेंटरिंग कर सकते हैं वो हम लोग आगे भी आपके एक्सपर्टीज का लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद कुलम जी, धन्यवाद राजीव मेरे जूनियर भी है BHUB के, एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही बहुत अच्छी नहीं है। सो माय प्रोफेशनल करियर, जैसे मुझे ने बताया, इट हैज बीन लॉन्ग एंड I have been in industry for 25 years and I started my second stint of entrepreneurship in 2021. So now the question is, when I started it, I have been in the entrepreneurship ecosystem for a very long time. और I have been an investor करे के बाद को शुरू करवाया है पटना में। It was the first investment platform to fund startups, right? और उसके पहले बैंगलोर में था, वहाँ भी फंड काफी करवाया था। But the observation was, why do we chose this topic, that first for 365 days, most of the startups are like babies, right? They die very early. और उसमें ऐसा नहीं होता है कि फंडिंग ही इशू होता है जो लोग समझते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है स्टार्टअप के फाउंडिंग टीम की नॉन क्लैरिटी ऑफ थॉट। So and being little more wisdom, almost now 50, तो थोड़ा ज्यादा दुनिया देख के समझ के, this was very clear to me, and then I proved it also. I told that if I believe in something, let me prove it out, right? So that's where I quit my job, pretty decent job. I was heading a pretty big group in Intel and started this company on a problem, and exactly did what I believed in and what I preached all the time. If there is a problem, find the problem. The first one to leave the job should be the founder, not the investor should come and put the money. If I see it as a problem, I should have something to show to the people that yes, it's solved, and then see that how the world reacts. Raising money, believe me, it's not easy. I'm saying it's not tough. We are 16 months, 17 months today. God being kind, Jai Ganesh, we got our first customer within 15 days of launching the product. But that's what world sees. I was working with my customer for past 6 months. So जो startup होता है, सबकी story ऐसी ही होती है। मतलब हम जब आए थे, when I told my wife, and I have 2 kids,
pretty teenage kids now, that if I believe in something, I'm not betting on the investor to fund it. I am betting on my life to fund this startup. That's very, very important. So, and when we started it, 23rd October 2021, when the company was launched, we told that the first 1 year is tough. Then it gets tougher. Then it is the toughest. After that, it is easy. So we are in the toughest side right now, where we have 7 to 10 customers globally, 7 in India, 2 in Australia, 1 in Switzerland, 1 in United States of Emirates. Now, we don't have funds such as we don't have funds such as big corporates, right? I was in Intel and my group's revenue was $600 million, which used to rate. So last thing which ever thought was money. We thought about talent as a crisis, climate change as a crisis, geopolitical issues. But when you started running the startup on a shoestring budget, then first thing you become very efficient. So your whole thought process has to grow like that. And first 365 days play a very important role. This shapes your vision. Either you will shut down and move on, right? You have only wasted probably given 1 year of experience. But my own agenda or my own learning to with you guys is that first 12 months prepared me for next 3 years. Now we are 3 years safe. We have 9 customers. Each of them has written a check. We actually don't need a lot of funding. Right? And the investors who came on board, they are also telling me, we will fund your Series A. You just keep executing. This is all first 365 days. अगर वो हिल जाता, तो फिर I would have probably joined back Intel. That was a deal with my vice president that he told, I don't think you will need, because type of guy you are, you don't leave things in between. Like, that's what I'm trying, but that's what it is. But my learning, and that's where when Rajiv and Kumaji told, I told, I want to talk about this topic. The first, how many of you are in like first 365 days crossed? And rest are below first 365? Okay, very good. So cross also, let's put this as first like 750 days or 760 days journey, 2 years journey, what we will talk of, where you have to focus as a founding team on everything. See, when I came from a pretty R&D background, right? Given my background, product banana, apne patent hai, paper वगैरह hai काफी. I was not a salesman. Now then I realized that building product in India is easiest because there are a lot of engineers. It can be difficult in different geographies. Selling product because we are not good salesmen. आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री को देखें, जहां से मैं आता हूँ, टेक इंडस्ट्री जैसे ब्रॉडकॉम, इंटेल, गूगल वगैरह है, हम लोग सिर्फ बनाते हैं. We never sell it. Salesman is some गोरा, right? और ये मेरी इनहेरेंट वीकनेस थी कि मैंने प्रोडक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया. मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा. I'll show you the problem on this laptop also if it's connected to internet. And then how did I visualize this? Buy the book. How did I build the first version of the product? Buy the book. Selling, I fell flat. Like, करूं क्या? Customer कौन है? ये तो सोचा ही नहीं था. Because we were always deep tech country by nature. And that was my first wicket. Gida. This was like first, I'll say when I started this journey before launch. It's always before launch of the company. So what I decided was, as a technical founder, the best advantage I have is I can build a product. So product bana. Product bana ke we went to the market and took the feedback. People were, wow, great, awesome, Divyanshu. Good. And these are like all general managers, my seniors from IIT Delhi, and then I am. But when I told who will write the check, they told, I never thought that I will write a check for you. So then I have to shut down that product. To give you, the first product was a virtual lab in the COVID time, because when virtual education was going in COVID, right? So I saw my kids. How many of you have faced this situation? Build something, not getting customer. One I see, two, huh? Many of you, some of you. Okay. And I told you my product was a virtual lab, which can be used to do labs, hands-on lab by students when COVID was going on. It's a very obvious product, right? कि आप PPT पे पढ़ा रहे हो, but बच्चा lab exercise कैसे करेगा? And I'm talking of colleges, cybersecurity lab. Nobody wrote a check. So that was my very strong learning, and I went into a little bit of introspection mode.
So first thing, as I told you, that first 365 days, and I come to a verge where I thought that, okay, अभी तो किसी का पैसा भी नहीं लिया है, मेरा ही है, चलो बंद कर देते. No, let me rethink about it. First is customer. Then the next time when I thought over it, I told this, nothing against colleges, but colleges are tough people to write check. They live on students' money. They know how to live on that. So very few. He is a different guy. You have seen him. But I was talking to a college called Reva University. It's a 6,000 crore university in Bangalore, but they were not ready to write it. 25,000 rupees check. They told free mein de do. I told मैंने दे दिया. But what after that? You need upgrade? No, I don't need upgrade. मेरा लड़का ऐसे ही पढ़ लेगा. So I told, this is the wrong market. I came back with my team, with one and me, one more person was there. So first 65 days, my first learning was like that पैसा कोई नहीं देता है. Investor पैसा दे देगा. I had people who were ready to dole out 25 lakhs rupees that time based on my credential. Intel में था, IIT से पढ़ा है, कुछ तो कर ही लेगा. पैसा दो, मैं उनका चेक लेके जेब में रखा हुआ था. And my commitment to myself was, जब तक 2 ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर दूं तो इनका चेक कैश नहीं करूंगा. I'll keep it. 25 लाख रुपए जेब में थे when I started. I kept it like that. घर से ऑफिस चल रहा था, बढ़िया आराम से 4 कंप्यूटर लगे हुए थे. वो जो लड़का मेरे साथ काम कर रहा था घर से, मैं काम कर लेता. So then I told, okay, let me look into that. It's a wrong market. So again, first learning, fail fast to succeed early. 3 कॉलेज के बाद मैं चौथे के पास गया ही नहीं. मैं बोला ये दुकान अब बंद हो गई है. No more operating. Then I told, let us look at a larger problem, who pays. So I went into a little bit of discussion. And this I tell that every founder should do. अगर कोई नहीं खरीद रहा है ना 3-4, तो मान के चलो ये 5वां भी नहीं खरीदता है. There is something wrong. They have a payment problem, there's culture problem, decision maker को trust नहीं है. उनका अच्छा solution है, जैसे Zoom है. So even if I give something new, you're not going to take it, right? So we came out. Then I was working. I'm a thorough cyber guy. Like I have, my background is like 9/11 जब हुआ था. So that time I was in Ireland and working for GE. So I was tracking the money कि terrorist का money कहाँ से है. So I'm pretty old and cyber guy. Don't worry about it. So I took it. Let me look at my strength. I jumped on the opportunity that time. कि COVID है, लोग virtual education में पढ़ रहे हैं, तो लैब भी खरीदेंगे. All self justification. Without asking कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और लोगों ने वाह भी कर दिया. But when I told कि चेक तो लिख दो 25,000 का, एक चलो, we will think and so on and so forth. 3-4 कॉलेजेस में ऐसा हुआ. And I kept the price to minimum. I told, let me see कि minimal viable product के लिए लोग minimal चेक दे सकते हैं. अगर minimal दे देंगे तो आगे भी दे देंगे, right? नहीं. Came back, we went on a different problem which I will show you right now. We saw that who pays. Because कॉलेज का पढ़ाई तो हो ही रही थी, मैं उनको बोल रहा था मैं अच्छा बना दूंगा, उनको जरूरत ही नहीं है अच्छा कहीं. Then we looked into the problem which world was suffering. This was on getting hacked. लिंक से हैकिंग चल रही थी बहुत ज्यादा. CCTV की हैकिंग हो रही थी, SCADA सिस्टम्स की हैकिंग हो रही थी, मतलब खूब सारी हैकिंग हो रही थी. And I was that time Intel just छोड़ के निकला था, तो I used to get call, दिव्यांशु फिर से गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ बताओ क्या करें. Then this time I was little smart, probably 45 days की learning बहुत अच्छी थी. I called up my senior in GMR airport, and that time they were building COVID in Hyderabad. COVID vaccine in Hyderabad, Bharat Biotech वाला. Boss, I have heard that you guys have got hacked. तुमको किसने बताया? बोले सर न्यूज़ है, आप बताओ. So yes. So बोले कुछ कर रहे हो? बोले यार कोई solution ही नहीं मिल रहा है. पैसा देने को तैयार है. I caught that word, पैसा देने को तैयार है. Good. There is something there. There is something there. Note लिया कि okay. Okay, चलो ये तैयार है. So we had this flexibility that don't get married to an idea. Flirt with the idea. Marriage बाद में होगा जब ठीक ठाक सब हो जाएगा तो. So we got that word. This was like 45 days to next 15-20 days. इसी तरह करके मैंने 3 ऐसे कस्टमर पकड़ लिए. बोले सर अगर सॉल्व हो जाए तो पैसा दो. बोले यार चेक आज ले जाते. हैदराबाद एयरपोर्ट का जनरल मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आप जानते हैं दिल्ली बैंगलोर में, जहाँ इन्फोसिस वगैरह है. इट्स अ बिग कैंपस, वेरी बिग प्लेस. उनके जो CEO थे, he have never known me. I just somebody told him कि this guy, this gentleman has developed a product which can save your other devices apart from computers to get hacked.
If you have this product, no number of devices get hacked. कंप्यूटर का तो आपके पास एंटीवायरस है, बट सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल कार्ड, स्काडा सिस्टम कुछ नहीं है आपके पास. बोले यार, आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद दैट बिकॉज दिस सिस्टम गो डाउन, आई डोंट इवन नो दे आर हैक्ड और नॉट. दीस आर हेडलेस डिवाइसेस. ही केम अप कि दिव्यांशु, आई विल गिव यू फ्री एक्सेस. सो आप कॉन्ट्रास्ट देखो, एक सॉल्यूशन बना हुआ, मुझे लग रहा है मार्केट अवेलेबल है, और उन्हें 25,000 रुपए नहीं दिए, 6,000 करोड़ कंपनी. मतलब ऐसे 3 कॉलेजेस, मतलब बड़े ग्रुप, रेवा था, 2 और थे, एक आरबी था, और दूसरे में ना प्रोडक्ट है ना कुछ है. द मार्केट नीड इज देयर, कि तू बना के ले आ भाई, हम दे देते हैं. सो जो सेकंड वाला जब किया तो बोले दिस इज द मोमेंट, इसको बनाओ. तो आई न्यू अलोन आई कैन नॉट बिल्ड इट. तो क्विकली आई लुक इनटू माय लिस्ट. आई टोल्ड कौन से एंटरप्रेन्योरियल दोस्त हैं जो मेरे को हर तीसरे दिन फोन कर लेते हैं, कैसा चल रहा है. उसमें से 2 थे, एक नेवी का कमांडर है, कमांडर के सर मिले हुए उनसे, है ना, और एक और को है जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है, बढ़िया हैकर रहा अपने फोन में. वो हर तीसरे बोला सर आपका वो वाला आइडिया क्या हुआ, IoT वाला, वी वांट टू वर्क ऑन दैट. बोला दिस इज द टीम. सो वी बिल्ड अ टीम. द सेकंड लेसन वाज ऑलवेज एज अ CEO, हाउ मेनी ऑफ यू आर CEOs हियर, जो फाउंडर हो, गुड, डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, बट नेवर गेट आउट ऑफ एनीथिंग. आप करो ना करो, आपकी नजर होनी चाहिए. सो वी बिल्ड दिस कंपनी विद इक्वल पार्टनरशिप, सबको बराबर पे लाए. कमांडर केयर रूम, मैं CEO और we rolled out a quick and the world's dirtiest product in 48 hours. 49th hour, Hyderabad airport was ready to try it and write a 2 lakh rupee check if the product is successful. हम प्रोडक्ट तो हमें पता था, we knew that it is hack, कैमरा उनका हैक हुआ, मेरे पास सारा डिटेल पड़ा हुआ था, मैं दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं. दोनों चेक दे दिए हमें. तो आई वाज लाइक, क्या हो रहा है ये, मतलब गलत क्या हुआ था लास्ट टाइम, इसमें क्या हुआ. पहली बार हम एक ऐसे आदमी को जलेबी बेच रहे, इसका पेट भरा हुआ था या उसको डायबिटीज थी, जरूरत ही नहीं. दूसरी बात, हम भूखे आदमी को सबसे गंदा 3 दिन पुराना खाना बेच रहे थे, उसने वो भी ले खा लिया. दैट्स व्हाट आई लर्नड, कि मार्केट की पल्स एज ए फाउंडर जरूर समझ. तो फिर मैंने एक नियम बनाया कि भाई मैं CEO हूं, आई एम गोइंग टू स्पेंड एवरी डे 4 आवर्स विद ए कस्टमर जिसको मैं नहीं जानता. फोन करूंगा, इनसे रेफरेंस लूंगा, आपसे रेफरेंस लूंगा और बात करूंगा, टू अंडरस्टैंड कि उनकी नीड क्या होती है. बिकॉज जो मार्केट की नीड है और जो हम बना रहे हैं, आप विश्वास नहीं करें, इसमें 99% का गैप होता है. सम जगह, कई जगह पे वो दिखता नहीं है. जैसे जब पेटीएम आया और डिमोनेटाइजेशन आया, हो गया, बट दैट इज नॉट द आइडियल सिचुएशन. आइडियल सिचुएशन इज जो कस्टमर है उसके पेन पॉइंट को हम नहीं समझते. तो फर्स्ट 365 डेज में जो आपको करना है, जितनी भी चेंजेस करने हैं बिजनेस मॉडल कर लो, बिकॉज आपका इन्थू नया होता है. यू कैन अफोर्ड टू हैव 1 or 2 फेलियर्स. जैसे आई कुड अफोर्ड टू हैव 1 or 2 फेलियर दैट टाइम. अभी आप बोलो मैं भाग जाऊं, मैं बोलो अब नहीं हो सकता भाई. एक लेवल की सैलरी लेता था, और अब कब तक चलेगा. So that was my learning, that fail fast to succeed early. Fail fast बहुत easy word है, मैं उसको एक बाद में एक्सप्लेन किया, to succeed early, कि आप जल्दी से सीख जाओ कि आपका फेलियर पॉइंट क्या है, और उसके पीछे मतलब हो कि यही फेल हो. If something is failing, it is failing, accept on a fact and get over it. ये फेल हो रहा है, what is the other thing we could do? How can I recommend? Not that you should change the business model, that also failed. I was in cyber. Connecting.y was in cyber, but I was building a wrong product in cyber and selling it to a wrong customer. Second time I had a customer जिसको कोई कुछ नहीं दे रहा. Now finding them is tough, maybe not easy, but not tough. If you look at today, if you are interested, I'm not talking about cyber because उससे आप relate कर सकते हो. And it applies to everywhere, because मैं 2-3 स्टार्टअप और यहाँ एडवाइजर वगैरह हूँ करे के भाई, उनके साथ भी कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है और आपके एक भी कस्टमर को दिख रही है, तो ऐसा 10 कस्टमर हो गए, पक्का है, आपको नहीं पता है. और कोई प्रॉब्लम सिर्फ आपको दिख रही है और एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो वाकई वो प्रॉब्लम है नहीं, वो आपके मन का प्रॉब्लम. सो दैट वाज माय वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग. और उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई अब हम जो करेंगे, वी विल बी ए कंपनी which will have 2 orders. We stayed on same thing. ये 25 लाख रुपए अब कैश हो जाएंगे, नाउ कंपनी बन जाएगी. So we went from August to, तब तक इनका POC वगैरह हो गया था, इनको बोला कि इस नाम की कंपनी बना रहा हूँ, इस नाम का आप चेक बना के दे दो.
दे दिया, बस डेट मत डालो, ठीक है। तो रेडिनेंट इनोवेशन हमने बना दिया आपको अक्टूबर में। जैसे ये बनाया, तीसरा कस्टमर खुद आ गया, क्योंकि इन्होंने रेफर किया यार मेरा अभी प्रॉब्लम था, इनकी अपनी कम्युनिटी है, वो सॉल्व हो गई, तो मेरा सॉल्व हो गया, आप भी कर लो। यू वोंट बिलीव, सेम 3 people, 2 in Delhi, me in Bangalore, no office, एक virtual office. We had 10 customers. 10 कस्टमर बने नहीं, but they all at least were starting one, इसमें 6 बन गए। तो माय बिगेस्ट लर्निंग कि एक भी कस्टमर मिल जाता है ना, तो दूसरा है, उसका भाई पक्का है, बस ढूंढना है। और पहला कस्टमर इजी मिल गया तो यू विल फाइंड समबडी, उनसे रेफरेंस मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम और कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, आप उसको देखो जाके। बट डोंट ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि एज अ स्टार्टअप आपके पास होता क्या है, टाइम होता है, एनर्जी होता है, पैसा नहीं होता है, और वो धीरे धीरे सैलरी में निकलता है, राइट। सो और आपने क्लाउड लिया, उसको पैसा चला जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में पैसा जाता है, तो यू हैव टू कंसोलिडेट योर एनर्जी। How quickly we find the right problem, that is the first whole thing. और this is, I'm telling you again, ये 2 साल की जर्नी नहीं, 3 साल की नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की है, कोई तब आपके पास एंथू होता है। मेरे को अभी आप बोलोगे आई विल जस्ट थ्रो एवरीथिंग एंड रन अवे, अगर मेरा नहीं चला, मतलब दैट्स लेवल, बट गॉड बीइंग काइंड, वी हैव गुड कैश एंड ऑल, चलो निकल गया। बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेथ से अपने आधा तो हमने क्रॉस करा दिया, आधा और 4-5 महीने में करा देंगे, 2-4 और पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट मेरे को वो मेरे लिए मैजिकल मोमेंट है, आई ऑलवेज प्रे गॉड कि भगवान ने इतनी जल्दी फेलियर कराई 45 डेज में, ये समझा दिया कि जबरदस्ती का मत बेचो भाई, इसको चाहिए ही नहीं तो क्या बेच रहा है। तो दैट वाज, आई से, एंड दिस आई कीप अगेन रिपीटिंग, 365 days, be very clear to experiment with your ideas. Don't think you will get idea right day 0. It is not possible. हम आप क्या सोचते हैं, हमको तो खरीदना नहीं है, हम तो बनाना है, हमें बेचना है, बनाना आपको आता है, जो खरीदने वाला है उसके पास जरूर है। एंड ऑफ दैट समबडी हैज टू पे, राइट। आपने ग्रांट ले ली, यहाँ से आपको स्पेस मिल गया आपके, बट unless until you find the buyer, not right to see that आपका स्टार्टअप है भी या नहीं। Second important, yeah, am I clear on this, or any one of you, if you deviate with this idea, call out. Any of you want to share some experience, call out. Any of you have faced this problem which I have faced? Yes, sir. हाँ। मेरे को आया कि चलो ठीक है, हम भी अकाउंट मतलब कुछ करते हैं, तो जिसमें उसका कॉपी करने की कोशिश किया था, तो पैकेट बनवाया, पूरी सामान मिला, बट वह उल्टा है, मतलब कि करीब तक कोरोना आ गया, प्राइस ज्यादा हो गए थे, 250 में मतलब पैकेट हम लोग सेल कर रहे हैं, कुछ दिन शुरू कर भी दिए थे, जैसे कोरोना आ गया प्राइस ज्यादा हो गई, 800 हो गए, तो हमारा वहाँ से जितना अभी पैकेट लगभग 5,000 अभी बचा हुआ है। तो क्योंकि उस बीच में जॉब कर रहा था, साइड कुछ करते हैं, कुछ हो जाएगा तो इससे आएंगे ब्लास्ट में आएंगे। तो ये फेलियर था कि अपना जब तक मार्केट सर्वे न कर, आर्टिस्ट समझ न ले, तब तक दूसरे कॉपी करके आप मार्केट में वेरी गुड लर्निंग किया। तो समझ जस्ट ऐसा कि सर जब जॉब करे तो उसी से हमने ट्रायल किया, उसी से फेल किया, तब से क्या हुआ कि मार्केट समझे, लोगों से मिले क्या करना चाहिए, नहीं करना, क्या लैकिंग है, क्या गैप है, क्या एनालिसिस किया 3 साल तक, इसके बाद अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम वेयर आई आल्सो हैव, वी फ्रॉम करे के पास साइड वी हैव इन्वेस्टेड गुड क्लोज टू $1 million इन टोटल, आप देखोगे तो most of the startups have this problem. They are so glued to build the right product, best in the world, that they don't even think that the customer needs it or doesn't. तो सारी एनर्जी और बाय इंडियन टेक्निकल माइंडसेट बनाना अच्छा लगता है, वाव फैक्टर अच्छा लगता है, उसमें चले जाते हैं। और आई वर्कड इन सिलिकॉन वैली 4 years इन यूएस, फिर यूरोप वगैरह में काम किया हूँ। वहां वी फाउंड अ वेरी ऑपोजिट कल्चर। दे फर्स्ट find a customer, then they take one flight to Banzhao to find the hardware, and second flight to Bangalore to find the software.
फिर उसको मिला के अपना प्रोडक्ट मैनेजर रखते हैं, टू अंडरस्टैंड कस्टमर, बोलते हैं इसको मिक्स करो बन, और ये कस्टमर को दे देते हैं। मैं ब्रॉडकॉम करके एक कंपनी में था, वी वर 40 पीपल डूइंग मोर देन $100 million। कैन यू इमेजिन? उस समय डॉलर 60 का था, 600 करोड़ का बिजनेस, 40 लोग मिलकर। और रीजन ये था, जो मेरा जो टॉप गाई था, ही वाज एक्सपर्ट इन साइबर, यूज्ड टू इनवाइट जॉर्ज बुश ऑन सिक्योरिटी, एंड द प्रोडक्ट मैनेजर यूज्ड टू नो सामान कहाँ से है। दिव्यांशु बैंगलोर में बैठा है तो सॉफ्टवेयर बना देगा, गोंजाओ वाला उसको हार्डवेयर दे देगा, और जो जर्मनी में बैठा है वो पूरा इंटीग्रेट करके पैकेज कर देगा। और वो ही वाज अ ग्लोब ट्रॉटर, तो उसको हम लोग बोलते थे, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, फॉरगॉट। So he used to meet customer, and believe me, we were an acquisition. So Broadcom has put $5.5 billion to acquire us, and our goal was, Broadcom CEO day zero when I came, they told, if you don't achieve $100 million, you are finished. That was our introduction to Broadcom. Cyvite करके कंपनी थी, हम लोग को Broadcom acquire किया, because they have burnt their 5 billion. So they're saying, यार तुम 3 साल में 100 million नहीं किया, तुम्हें बंद कर देंगे. That was my welcome speech. That's what we heard. And this guy was clear कि $100 million will grow in 6 months. 6 months में नहीं हुआ, but 1 year में उसने कर दिया. The reason he always knew कि सामान बनना हार्डवेयर के लिए चाइना चले जाओ, सॉफ्टवेयर के लिए इंडिया चले जाओ, कस्टमर ढूंढो, कस्टमर नहीं पता है कहाँ, ग्राहक, जो हमारा दुकान वाला लिखता है ग्राहक देवता होता है, देखो, he actually makes sense. So that learning stayed with me कि यार बन जाए, और इंडिया के अंदर बन जाता है, यूरोप में दिक्कत होता है बिकॉज मैन पावर, इंडिया में बन जाए. If you find somebody anywhere, you make something. So find a customer. और ये जितनी जल्दी आप कर लो, easy हो जाता है, because nobody stays in the business for long making no profit. तो ये मैं आपको फर्स्ट 365 डे की जर्नी का ये बात तो पक्का बता देता हूँ, इसको गांड बांध के आपको. ये हमारे सेकंड इनिंग में बहुत काम आई, बिकॉज मेरा सिटी ऑर्को मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि तुम प्रोडक्ट कैसे बनते, और उनको कहा कि मैं जानना भी नहीं चाहता कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप क्या करते हो. My goal is to get you one POC, proof of concept run, every month. Past 15 months, I am doing 2 POCs every month. Our success rate is, if we do 3 POC, we get 1 customer who pays a crore up and down, 80 lakhs to 120, 1.2. लेकिन मैं बोला, अगर ये कस्टमर नहीं है तो ना कुछ बनाओ ना कुछ करो, आराम से बैठे रहो. Don't build something out of it. Once we have done 10 customers, now we are approaching that. Then we started thinking that what else our customer will need. The good part, we are into B2B business. मतलब B2B हमारे ONGC कस्टमर है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बैंगलोर मेट्रो है, हैदराबाद मेट्रो को बैंगलोर मेट्रो ने रेफर कर दिया. आज कल जो है, आई वाज इन दिल्ली, तो दिल्ली मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो दे शोड इंटरेस्ट, उन्होंने लेटर भेजा कि हमको दिखाओ. वन मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, which was not my direct customer. I found somebody who used to work there. I told her, go and talk to, वहाँ के जो MD है ना, अंजू मिलियस, he is from Sasaram. He sat with us for, he is a very senior ISO, sat with us for 1.5 hours. बोले कि our product helps you with one thing. इसमें इंटरनेट है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो that you will get that what my product does. शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं. आप लोग गूगल यूज करते हो, करते ही हो, मेरे बारे में जानने की कोशिश की हो थोड़ा बहुत, या नहीं किए हो? सच बताओ, नहीं किए हो. जानना होगा तो यही करोगे ना, गूगल में जाओगे. व्हाट इज गूगल? गूगल इज अ क्रॉलर, जो कि किसी भी वेब सर्वर, आप सब टेक्नोलॉजी में हो, है ना, किसी भी कभी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन वो अपने डेटा सेंटर पे डाल देता है, राइट? दैट्स व्हाट डू. देन विसे दिव्यांशु वर्मा में जानना है, कुमुदी के बारे में जानना है, राजीव के बारे में जानना है, BHUB के बारे में जानना है, यू गो टू गूगल एंड क्वेरी, इट गिव्स यू दैट, राइट? व्हेन वी आर हैप्पी, जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, लेट मी लॉग इन. is a crawler for hackers.
तो सेव तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो दिस इज अ गूगल ऑफ हैक डिवाइस। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? बोल दो नहीं और ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर आपको ये पता लगाना है कि अभी पटना शहर के अंदर कितने डिवाइसेस हैक हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। नंबर देख रहे हैं आप? ये पटना का डेटा है। हाँ, ये इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि तो इसमें लिस्टेड है, ऐसे 10 वेबसाइट है। अगर आपको इंडिया का देखना है तो मैं कहा मैं साइबर में काफी समय रहा हूं, तो वी हैव मॉनिटर्ड कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज। आने दीजिए, हाउ मच नंबर 8 मिलियन, राइट? सो व्हेन कोविड वाज गोइंग ऑन, आई हैड दिस डिजायर टू सी इटली में क्या चल रहा है, बिकॉज फर्स्ट राउंड में वी हर्ड कि चाइनीज लोग इटली चले गए, वहां थक गए, चाइनीज बना दिया एंड फैल गई, राइट? I use this device, this website only, to find out what is going on the streets of Italy. जैसे मैं भी आपको इंडिया का दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान का भी दिखा देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, आप जो बोलो दिखा दो। So if you are, so this is a crawler. जैसे गूगल है ना, आपने अपना डेटा अगर वेबसाइट पे डाला तो गूगल उठा के डाल देगा, right? You cannot hide. You can run, but you cannot hide. That's what we say. Similarly, this crawler, there are tens like that. We also have a very smart version of this. We can beat this, by the way. So I use this to collect the data, there exists a market or not. और इसमें मैंने एम्स का निकाला, GMR का, इसलिए मैं पहले से निकाल के बैठा हुआ था डेटा, when we talk to them. So I told boss, let's, sorry for the language, beat the shit out of it. So I used to go and watch Italy happily. इटली के स्ट्रीट में देखते थे खाली है, फिर sad to say उनके डेड बॉडीज जाती थी, I used to watch them live. फिर मेरे को डिप्रेशन होने लगा तो मैंने उसको बंद कर दिया, that's a different thing. But we use a lot to hit China by this in Galwan time also, off the record. Okay, so this gave me the use case कि अब इंडिया में अगर इतना सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी हैक्ड है तो इसको मैं अब निकाल देता हूँ यार, ये ना थोड़ा सेफ चीज है नहीं आप लोग के लिए, ठीक है ना? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. So this gave me the like validation of the problem which I am going to solve, right or wrong? So ऐसे क्वांटिटेटिव रिसर्च करके मिला और तभी मैं इस पे भरोसा नहीं किया. आई कॉल्ड GMR गाइस कि सर सुने आपका कैमरा कुछ उड़ गया है एयरपोर्ट का. हाँ तुमको सर आप छोड़ के पता लगा. बोला सर यस दिव्यांशु कुछ कर नहीं करना है, एंटीवायरस भी नहीं होता है सीसीटीवी कैमरा का, एक्सेस कंट्रोल का, मैं क्या करूं? तो सर विल डू समथिंग. ही रोट द चेक बिफोर ही गॉट द प्रोडक्ट. 365 days लर्निंग, कस्टमर पहले ढूंढो, प्रोडक्ट बाद में. सेकेंड लर्निंग, वंस प्रोडक्ट बनाओ, मेक इट बेस्ट इन द वर्ल्ड. जो फर्स्ट वर्जन जाए, कोई न्यू प्रॉब्लम था तो वी हैड एडवांटेज दैट नोबडी एल्स वाज देयर. तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं. तो आर यू गेटिंग द वे आई अप्रोच द प्रॉब्लम? एनी ऑफ यू फील इट इज डिफरेंट देन यू कुड हैव डन? बताइए क्या किया, कैसे करते? So what I was trying to tell you, what I'm trying to tell you is, as a founding team, you guys are lucky that there was somebody who funded you here. That's good. That's a good problem. Okay, so if you see my my genesis of talking this problem, I have been in this domain for 12 years. My first talk on IoT security was in 2013. That how vulnerable is this ecosystem? But that time, not many devices were there. Okay. So by the time COVID came, this became very fast.
So we build this system. This is a web-based service which today organizations use to find out that their devices are hacked, vulnerable. Okay, we do for a lot of big companies. Okay. So what happened was everybody was thinking and we launched it. We told, let's do that because one faida was that I was in this domain for a very long time. The other guy was a defense guy. And the third guy was a hacker from the age of 16. So we quickly built it. It was, I told you, the world's dirtiest product delivered in 48 hours and 49 hours. Before 49 hours, there was a customer. To go and use it. Customer was so desperate so that I have to something to find out because that time in Hyderabad, a lot of scientists used to come from different places of India to experiment on our vaccine. And government mandate was keep them safe. Nobody should know who's coming, who's going. They cannot shut down the camera because it's airport. Something can go wrong, right? So they were desperate to have anything to try it out. Just like we now work on some other problem, we'll talk about it. So if you can get, because if you have a prior idea and you know that the solution doesn't exist, then it doesn't exist for anybody. So I knew that there's no solution. You are already part of this subject. You are already knowing that you're working in the domain. For a lot of clients here, they might work in a different domain altogether. Yes. There. So then you have to learn that, do the journey. Maybe a short journey to know that is your problem आप attempt कर रहे हो solve करने का. As I was trying to solve a virtual lab problem without having a detailed journey in that. Is it the right or not? Spend some time. Don't build a product and show to somebody. People will say, wow, बहुत अच्छा बनाया. But 25,000 रुपए नहीं निकले. And I told इसका मैं तो उसको फ्री में दे रहा था, but फ्री में ले लेते. मैं बोला अच्छा इसको 10,000 डालो, बोले 25,000 डाल देते. लेकिन सर कोई 25,000 भी देता है कि नहीं. That's what happened. नहीं दिया. दूसरे केस में जब प्रॉब्लम बर्निंग है तो 2 लाख रुपए का चेक, मैं बोला सर कंपनी का नाम मत डालो, आरओसी के यहाँ जाना है, उसको ठीक है बस चेक ले जाओ कि तुम जल्दी से बना के दे. So that onus is on me to supply it. And I know from IT days, so बोला कि जाएगा नहीं. So that's the difference. That if you have got a problem and the problem doesn't come in the night, there's no Archimedes there. You have to go struggle. जैसे मैं उस website से what I did. My website connect was to find out what is going on in the world because we used to hear a lot of things about China, this, that. I told okay, I'm a hacker. I have been a hacker, you believe that. So I can into countries and look into that, what to do, figure it out. So we started monitoring Italy and then we found that this is a global problem. India का इतनी बुरा हाल है. इससे भी ज़्यादा कुछ सारे ठीक करवा दिया. So that's where you can connect your problem if you have the prior knowledge, like आपका experience है. जो दूसरी जो what you told Rajiv is a very pertinent question. A lot of people I see, they jump on hearing that this is an opportunity without putting a lot of time. My own theory, it can be right. I'm not saying that this is the wrong way to do that, but please validate it. Meet 10 customers. Say that 5,000 रुपए दोगे यार, मैं बना के दूँ तो बना आप लोगे. I am pretty confident saying you can build a better product than I can do. But customer ढूंढना पे कभी ध्यान मतलब. Or if you have a right customer, right attitude, they wait. So today I work very closely with ONGC. They are waiting for me to give out the new version. 3 months. Advance देके बैठे होंगे. हमने उसका कैश नहीं कराया, but they have paid us. कि आप लेके जाओ. Solve now to build this problem, you definitely need a very deep knowledge on cyber. तो पहले तो आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए. ये हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है. So that's where your domain comes into picture. How many of you are non-computer science? And doing a computer science startup? Careful. No, then you are computer science. So yeah, degree means nothing to me. I'm an electrical engineer, chip designer, but I moved to cyber because I designed chip, then I like this one. So domain. We will discuss it later. Let me talk on 365 days journey first. So that becomes, we'll talk about it. That's the IoT side of security. It's a different thing, threat modeling, वगैरह है. I am very deep in that. So I color my hair, just leave that. So, enough white hairs. So as a founder, what is important here, Centreic, is finding the problem that customer appreciates. Even ready to put 5 rupees, 5,000 rupees, take it. You have one paid customer.
Today, I was in DST is a sponsor for us. They have invested probably $200,000 with me. I was in a DST conference 2 weeks back. There are 5 startups out of, I think, 300 who had paid customers. Everybody is experimenting building product. I don't want any of you to fall in the trap. And I know him for long. He's a brother. He will go extra mile to get you everything from government. Always remember, it's a taxpayer's money. रिक्शा वाला, ऑटो वाला, चाय वाला, सबका पैसा है हमारे पास. आपने भी लिया ग्रांट, मैंने भी लिया, सबका पैसा है. हार्ड अर्न मनी, धूप में साइकिल चला के पैसा दिया. इसलिए फाइंड कस्टमर्स. इफ यू डोंट हैव अ कस्टमर, स्टॉप इट. वो फेल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बिजनेस मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल होना है ना. और ये जर्नी आपको 365 दिन के अंदर करनी. आई एम अगेन रिट्रेटिंग दैट. आई विल कम टू द सेकंड टॉपिक. ये क्लियर हो गया? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाउ ओनली टेस्ट इज कस्टमर. रेस्ट हैकाथॉन है, कर लो. एक अवार्ड मिल गया, 50,000 रुपए मिल गए. कस्टमर नहीं मिला, बॉस मेरे पास तो आओ भी, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ. काम क्यों कर रहे हो काम? Who will pay for it? Second important thing. Now we close on the problem identification. We are clear? Once you have that, hold it like your child. I have 2 kids, so I know how precious they are, right? None of you seem to be married yet, maybe 1 or 2. So, like, then you do your engineering jargon. Best brain, experience, दुनिया की जो सबसे अच्छी चीजें हैं, आप डालना शुरू करो. MVP जब आए, तो MVP को लोग बहुत लोअर लेवल का बना देते हैं. वैसा मत बनाओ. उससे क्या होता है, जो पहला कस्टमर होता है वही भाग जाता है. मेरा एक फ्रेंड है, उसने 2014 में इलेक्ट्रिकल बाइक बनाया, एक भी नहीं बिका. क्योंकि उसने सोचा कि ये बाइक है या साइकिल है या ट्राई साइकिल है, मेरे को ये बता देता. यूजर एक्सपीरियंस इतना गंदा था दैट नोबडी वाज रेडी टू ट्राई. जो बनाओ वो कम से कम कस्टमर का 2 प्रॉब्लम तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करे. इट शुड बी एबल, जैसे हमारे केस में था, तो ये सॉफ्टवेयर बूटेबल था, रनेबल था, ये रिपोर्ट बना देता था, जो आप देख रहे हो, है ना. अभी तो ये काफी बदल गया है. अभी तो इट कवर्स लॉट ऑफ डिवाइसेस. कुमुद जी ने देखा है, वो पहले सिर्फ सीसीटीवी कवर करता था. अभी तो ये इट कवर्स एवरीथिंग. यू कैन थिंक ऑफ इट, इट कवर्स, इट डजंट केयर. बट इट्स लाइक 5.0. 1.0 में सिर्फ सीसीटीवी कवर, बट उसको पूरा कवर कर. जब GMR ने चलाया तो दे गॉट दैट आउट ऑफ देयर 20 कैमरास व्हिच दे हैव गिवन अस टू ट्रैक, वी कैन बीट 12 without knowing the password. We entered, steal their videos, showed them this is what it is. And that's why your cameras are going up and down. We showed them that their cameras were so bad that जमीन पे कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ हो रहा है. Because we could busy look the camera. कैमरा स्लो हो गया तो आप आगे से निकले, उसने कैप्चर ही नहीं किया. थोड़ी देर बाद अगर कैप्चर हो गया तो बाद में भेज दिया. So anyway, so we could good about of 48 hours में, क्योंकि एक तो डोमेन की नॉलेज थी तो हमने करके उनको बता दिया. So they learned, they played with us. Now they are my distributor also. Apart from being a customer, they also sell my product. So, and so what I have seen is, if you have hit the right nail, there will be no, if you have found first customer, as I told you, there is a second one. सारी कायनात हेल्प करती है. इट्स राइट थिंग. GMR हुआ तो महिंद्रा डिफेंस आके बोलते हैं, GMR के साथ क्यों चले गए, मेरे साथ क्यों नहीं आओ? बोला यार मैं 3 लोग की कंपनी है, बोलने में शर्म आ रही, कैसे आऊँ तुम्हारे पास? बोले टिकट मैं भेज देता हूँ बॉम्बे आने का. बोले टिकट के पैसे हैं भाई दोस्त, लेकिन आने में बोलने में खराब लगता है, मैं महिंद्रा डिफेंस के साथ काम कर रहा हूँ. तो नहीं तुम आओ. दे चेज्ड अस, दे साइंड द POC. अभी उनके साथ हमारा MOU है और स्मार्ट सिटी में लगाना शुरू किया. बिकॉज मैं वही कह रहा, और मैं यही सोचा हुआ क्या यार, मतलब ऐसा क्या था पहली बार में मैं इतना गलत कर दिया, एक भी नहीं मिला. 25,000 रुपए मतलब मैं मांग रहा हूँ, मैं मांगते शर्म आ रही है. लाइक वेरी हाई पेड गाय इन इंटेल, ठीक ठाक IT वाइटीज पढ़ा हूँ. रीजन वाज माय कस्टमर वाज नॉट रेडी. कस्टमर नेवर हैड ए प्रॉब्लम, आई वाज फोर्सिंग अ प्रॉब्लम ऑन देयर हेड कि ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, मान के चलो. बोले नहीं है. तो उस लूप में मैं बहुत मतलब आई एम बोल्ड इनफ. आई एम द गाय व्हेन I'm a married man, I can take a lot of shit in home, so I can text anywhere. That's what it is. I can hear complaints after complaints. And I can listen to that. That's my thing. That I will listen to you. Even I'll say I don't agree to any of it, but I'll listen to you. वो help किया बस. उसके बाद, then my next challenge, not a problem. I have found this problem.
I found this problem in somewhere around December 2020, जब मैंने GMR का किया। 2021 8-10 महीने मेरे को लगे फर्स्ट बढ़िया वर्जन। उनको पहले क्विक वर्जन देते रहे, मतलब जो ट्रायल कर दिया वो हैप्पी हो गया, बोल ठीक है दिव्यांशु विल वेट फॉर यू, अभी आप मेरे को क्विक डर्टी वर्जन दे दो, उससे हम चला के काम चलाएंगे। दे वेटेड 6-7 months for the solution to come. That was the good advantage. We were very happy. Then we told, okay, let's cash those 25 lakh rupees from the investors. वो कैश किया, फिर कुछ और फंड आ गए, तो फिर एक ऑफिस पे सोचे कि अब ले लेंगे, कोई किस्मत लिया नहीं हमने, मतलब that's what it is. और जो फर्स्ट कस्टमर मिला उसने 4 कस्टमर दिए। ये तो ये कहानी। और लर्निंग यही था कि यार अगर एक कस्टमर है तो दूसरा भी, और नहीं है पहला नहीं है तो कोई नहीं है, फिर भूल जाओ, फिर फाइंड द वन, देन ओनली यू स्टार्ट विद। So second team was building the team. As a founder, you have to be what we call, बुद्ध में बोल रहे हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल है कि अटैच्ड डिटैच्ड। जैसे मैं CEO हूं और आई हैव बीन अ डीपर प्रोडक्ट डेवलपर, बट आई जस्ट ट्रस्ट ऑर्को। ऑर्को ने बोल दिया ये नहीं होगा तो नहीं, मैं उसको कमिट नहीं करता। अरुण ने बोल दिया कि ये कंप्लायंस होनी है तो होनी है। So that those two people who were new to me, at least in the journey, because I was always a corporate employee, I was a director, 70 people niche, boss is right, I walk the street, I own the street, right? But that doesn't work in entrepreneurship. The second flaw which Indians have, and मैंने देखा है, लड़ाई हो गई फाउंडर्स में, for the reason जिसके लिए बच्चों में लड़ाई नहीं होती, कि उसने मेरे को ये नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो ओके, डिस्कस इट आउट एंड सॉल्व इट आउट, एंड व्हाई डू यू वांट टू नो। जैसे मैं अरुण को बोल रहा, अरुण मेरे को मत बता भाई, चाहिए ही नहीं जाना, इस फंक्शन में यू आर द बॉस। तो नेक्स्ट 3 months वी वर्क टुगेदर दैट दिव्यांशु का रोल CEO का होगा। बोले कि पहले को मेरे को बताओ मैं CEO क्यों बनूं, इवन दो आई एम CEO, बट बताओ। बोथ एग्रीड दैट यू आर द मोस्ट फेस ऑफ द कंपनी, दैट्स व्हाई यू आर द CEO। अरुण टोल्ड आई एम अ डिफेंस गाय, दिव्यांशु आई एम द रिस्क गाय, ही इज अ पैराट्रूपर। उन्हें इंडिया की जितनी शिप्स बनी है, नेवी शिप्स, सब उसके हाथ से निकली है। तो बोला कि मैं रिस्क देखता हूँ तो मैं ऑपरेशन संभालूंगा। और बोला सर मैं तो हैकर हूँ, मैं तो प्रोडक्ट बनाऊंगा, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है लाइफ में। ठीक है चलो। तो हैव अ वेरी ओपन हार्टेड डिस्कशन, और इसमें कभी कभी आप मेंटर भी लाएं। सो एक बार जब प्रॉब्लम मिल गई आपको, एंड आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉब्लम आपने अकेले ढूंढा है, अगर 2 लोगों ने ढूंढा तो यू हैव द टीम ऑल्सो। अगेन दिस फर्स्ट 365 डेज जर्नी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट कि आप उसको बाद में अप्लाई करो गड़बड़ हो जाता है, कोई तब ड्रिफ्ट होने लगते हैं। एग्री टू इट हार्ट टू हार्ट कि दिव्यांशु ये रोल करता है, ये रोल करता है, ये रोल करता है, इसलिए करते हैं। दिस वी डू गुड, वी एंजॉय डूइंग इट। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब आई बिकम द फेस ऑफ द कंपनी, बट आई डोंट डिक्टेट हाउ द प्रोडक्ट इज गेटिंग बिल्ड। और कोई करता है, मेरे को आइडिया में और कोई ये सोच के देख, उसका ही कैन से नो, बोले नहीं सर ये नहीं जम रहा, ठीक है। अरुण बोले नहीं नहीं ये तो कंप्लायंस कभी रोक दो, तुम कोई कस्टमर नहीं आ रहा बिकॉज़ तुम्हारा कंप्लायंस कंफर्म नहीं हुआ, एंड अरुण इज फाइन। अरुण का है फाइनल स्टैंप है, एंड आई हैव दिस अथॉरिटी, ही हैज अथॉरिटी। तो टीम बनाइए, ये अगर आप कर लिए तो देन यू आर सेट बॉस। यू हैव अ कस्टमर, you have a team, you are ready to be invested। आप लकी हो कि आपको इन्वेस्टमेंट पहले आ जाता है, बाकी जगह नहीं होता, हमारे केस में नहीं। I had people, one guy is a $300 million guy, he has sold his 2 companies to who is my investor, 2 companies to Cisco। He told get me the product MVP, minimum viable product, get me a customer and get me the team, check is yours। ये 25 लाख का चेक दिया था। जब उसको दिखा दिया तो सीनियर ऑल्सो है, हमारे डेल के प्रेसिडेंट इंडिया थे। तो आपको बताऊं, व्हेन यू टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीजें आपने कर ली, 9 out of 10 times you will get investment। तो मेरे को मतलब इट वाज नॉट अ मैजिकल कि एक बार में समझ में आ गया। और दिस फॉलोज एवरी टाइम, ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट किया सेकंड राउंड में नहीं मिल रहा, नहीं। जो आपका इन्वेस्टर आया भैया आपका सेकंड राउंड का इन्वेस्टर बन जाता है। मेरे केस में जो इन्वेस्टर फर्स्ट राउंड में आया था, कॉग्निफाई करके प्लेटफॉर्म है, आप लोग के से भी उनका मौजूद हो जाएगा, वो मेरे सीरीज तक रेडी है कि हम करेंगे आपका। So one thing is that if I have done my job right, rest all support us। Entrepreneurship is not as wide and scary as people talk। It is scary till date we don't hit the right problem and we don't have the team, we start fighting।
Then we burn money, we question, we waste time, energy. We put our mind in everything which is neither customer nor product. तो ये दूसरा जो pitfall है. How many of you have suffered like this? Team में आप बताओ, talk freely, right? That's one thing I always say, that entrepreneurs don't talk freely. They'll always be alone because nobody is there to do mentoring and counseling for you. I have faced it. I have to fire one founder. We are 4. I told this guy doesn't shoot. We have a talk. I told no, you're not doing the thing the way you're doing because I found him doing something wrong. He updated me on something which was wrong. He was heading the marketing. I told okay, head it, no problem. But his data were not matching. वो पहले 2 कस्टमर मैंने लाए, उसका तीसरा ही नहीं रहा. मैं बोल रहा हूँ तो फिर तुम मीटिंग कैसे कर रहे हो? You're not meeting people. So one fine day I told this is the problem. I want to discuss in the board. Board बिठाए, हम लोग 4 लोग ही board में. I have to ask him to quit. Because to me, Redinent is a company which has raised money 25 lakhs ही सही. मैंने अपने साल के जिंदगी के 8-9 महीने तक लगा दिए थे इसमें. 2 लोग और ले आए थे, एक नेवी का अच्छा खासा बंदा और एक जो कहीं काम कर रहा. I cannot risk this company just because there is one bad apple. So as a core founder or main founder or the main guy who has the idea, you have to be very dispassionate. You have to be very dispassionate. और उसमें बुरा नहीं मानना. आप बोलो कि आप शेयर होल्डर हो जाओ, चलो आपके पास जो स्टेक है थोड़े रख लो. मैं तो उसको वो भी नहीं दिया, नहीं. बट कीप कंपनी इन द सेंटर. टीम अगर सही नहीं हुआ तो आपके अच्छे प्रॉब्लम, अच्छा सॉल्यूशन गोस फॉर वेस्ट. फर्स्ट 24 मंथ्स वाले स्टार्टअप के लिए जो इन्वेस्टर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, आपने फेस किया या नहीं किया, हु इज योर टीम, हाउ लॉन्ग यू गाइस हैव नोन ईच अदर, व्हाट वेज योर पॉइंट्स ऑफ डिस्कनेक्ट, हैव अ हार्ट ऑफ डिस्कशन. जैसे अरुण बोलते हैं मीटिंग में कि दिव्यांशु समटाइम्स बिकम ओवरली ओवरपावर्ड, ही इज लाउड. He's told customer go to hell. I've told Sunday, which is wrong. I should not have done that, but I did it because he was talking very modern. और मतलब को प्यार से बोल सकते हैं, बोल चलो, I'll take that risk. So have your weakness, have your strengths, very openly, because end of the day, as a founder, we are company's heart, mind, soul, body. और है क्या, right? Am I wrong? Right? Am I only talking in air? Only talking in air? Yes or no? Yes. Okay. कहाँ पे लग रहा है कि मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ? अच्छा, हाँ बोलिए. हाँ. हाँ. जैसे कि you gradually ended up learning the art of selling. You became a salesman, which did not. You have not, still not. Yeah. As an entrepreneur, as a startup founder, कितना जरूरी है के लिए खुद उस चीज को सेल्स का जो salesmanship की जो skill है उसको सीखना, and then especially what do you do to ensure that you get sales? Okay. Very valid question. This is the $1 million question I can tell you. इंडिया के अंदर बनाना इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, and I learned it very smart way कि यार बन जाता है. I can build it quick and dirty and give it. बिकता नहीं है, बेचता नहीं है. तो in my team, I was the core guy who had this idea. I was the guy who perceived this idea. If I have to say, you Sodan दिखाया इनको, अरुण को convince करने में I took long time. It took me almost like 8 to 10 weeks. तो नेवी का बंदा वो अड़ गया, बोला ऐसा नहीं होता, इतने सीसीटीवी कैमरे सारे तुम हैक कर दोगे, मेरे को दिखाओ ये वाला. चलो उस दिन चाइना का कैमरा हैक उनको दिखाया करके, फिर तो वो मान गया. But then I realized that, and I openly talked to my founders, who is going to sell. So Arun told मैं बेचता हूँ. He failed. Because our thought was कि अरुण की नेवी के बहुत सारे लोग हैं होटल्स में और एयरपोर्ट्स में, तो बिक जाएगा. But he was not the core guy to have this idea. So when he used to start conversation with the customer, वो पंच नहीं आ पाता. मैं इस प्रोडक्ट को 50 तरह से जस्टिफाई कर दूं. If I sit with, and I do that because my journey has been longer than it. So what I see, the sales and the product should be with the guys who are massively deep in that.
if you have a conversation with me, I can explain you. That only happens when you are the first guy to perceive order, second guy to perceive order. Even though all of us are co-founders, but the way you articulate your problem to the customer only happens better if you have a long journey to, right? तो वो आपको देखना पड़ेगा आपस में कि किसमें सबसे बढ़िया है. It's not about conversation. It's not about etiquette. It's not about being nice. It's not about knowing. It's about who articulates the problem better. जैसे मैं आपको क्या किया, मैंने आपको पहले तो सोडन नहीं दिखाया ना लॉगिन करने के अलावा, मैंने पहले गूगल दिखाया. So first I bought your trust कि गूगल ऐसा चीज है जो क्रॉलर है. फिर बोला कि भाई जैसे गूगल क्रॉल करता है वैसे ये भी क्रॉल करता है, बट ये दूसरी चीजें क्रॉल करता है. हम इसमें शिप की पोजीशन निकाल देते हैं बैठ के. तो because my journey is longer, so I became the sales guy. Even though I did no selling, I did not know prospect और suspect, वो जो 4-5 स्टेज होते हैं पाइपलाइन से, कि मेरे को नहीं आता. And one very interesting thing to note here is, Arun was his team member. He said he was not able to sell, and then he did not lose his faith in Arun. मतलब ऐसा नहीं है कि Arun नहीं बेच पाया तो भाई हमसे बायस हो गए, Arun बेच ही नहीं पा रहा है. हेलो मतलब क्यों रखा? हेलो मतलब that did not happen. हेलो They were trying to. हेलो इस पोल में सबसे बेस्ट हेलो कर सकता है. So it was that's a wonderful. हेलो जरा दिखाता हूँ उनका. Someone is trying to say something. Oh, someone Hello. is asking. Yeah, go ahead. हाँ प्लीज. हेलो हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. सर, कहना है ये कि जैसे सर का जो प्रोडक्ट वगैरह है, हम स्टार्टअप के लिए कैसे ये सुटेबल होगा. हम लोग भी कल को एक संस्थान होंगे, एक इंस्टीट्यूशन होंगे जो शुरू से आज भी हम लोगों के पास कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग कहीं भी डिस्क्लोज नहीं चाहते हैं. कैसे कर पाएंगे? भाई अभी मैं सेल्स नहीं कर रहा हूँ, प्लीज. मैं करूंगा आगे दूसरे बार. कुमार जी को we will talk about it. I will give you free. आप ले लो, आप तो मेरे बच्चे जैसे हो, छोटे. He is Arun, कमांडर के अरुण. देखो he is Arkodhar. This is me, the old guy. तो इसमें हाँ, we'll talk about it, the selling. I will tell you that. Let me first, देखो वो एक स्पेसिफिक मेरी सेल्स पिच हो जाएगा. I don't want to do that. First I want you to tell you my journey so that जो मेरे को डर लगता है ना, see I am यही बेगूसराय से हूँ, पटना में रहा हूँ, बांका से पढ़ा हूँ, and I have been the बिहारी उस स्टेज से कि I am from Bihar, IT US तक किया हूँ, and I have fought battles to prove that Biharis are better than everyone. So my लाइफ का एक गोल है कुमार जी के साथ कि मैं इस जगह के लिए जो चाहिए दे दूं. कुमार ने पूछा आज कैसी नींद है, बोले जैसे मम्मी गोद में नींद आती है वैसी आ गई, आपके आगे मैं सो गया पट से, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू सर. तो ये है, तो इसलिए मैं बड़ा लगा रहता हूँ कि आपका बिहेव से आप लोग यूनिकॉर्न बनो, और ये बन सकता है. मैं आपको बस ये बोलने आया, और मैं आपको अपनी बस उतनी देर की जर्नी बताऊंगा जिसको मैंने खुद जिया है, एंड आई हैव लिव्ड एवरी डे ऑफ इट. वो चैलेंज है लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ढूंढना मेरे को समझ में आ गया यार, ढूंढते कैसे हैं, तो वही आपको बताया. सेकंड टीम का बताया. ये टीम नहीं है ना तो आपको इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा, ये आप मान के चलो. कस्टमर भी नहीं खरीदेगा आपसे, बोलेगा खरीद लिया, चेक डाल दिया और ये कल को कंपनी बंद हो गई, मैं तो फंस गया. तो यू हैव टू शो ए वेरी बोल्ड फेस हियर. हाँ, तो ये तो वो तीनों स्माइलिंग फेस है एकदम. मतलब हम लोग तीनों बहुत शिद्दत से, मतलब मेरा कोई भी डिसीजन होता है जो मैं इन दोनों के बिना नहीं लेता. मैं बोलता ना पहले उनसे बात करके आओ तभी करूंगा. हाँ करना तो मैं करूंगा नहीं. सर्च नहीं होता यार, टीम बनाना पड़ता है. एटीट्यूड, हाँ आई टॉक अबाउट इट. एटीट्यूड, नेचर एंड ट्रस्ट. पहले क्या है, दोस्ती से टीम नहीं बनाई. मतलब आई हैव फ्रेंड्स जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको फाइनली बोला भाई तुम इन्वेस्टर बन जाओ लेकिन तुमको कंपनी में मैं नहीं आने, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी कभी 8 बजे की क्लास की नहीं थी सुबह. तो मैं बोलता ये तो टाइम पे आएगा नहीं. आई हैव बीन ए फ्रंट बेंचर. तो मैं बोला जब मैं कंपनी बना रहा हूं तो आई हैव टू सी द कोर स्किल्स. तो सबसे पहले ऑर्को को लाया. ऑर्को को मैंने बोला ये अगर तुम 48 आवर्स में ये प्रॉब्लम बना दोगे तो यू आर इन और यू आर आउट. आई विल गो बैक टू माय इंटेल. हाँ
और मैंने और को ये कहा कि तुम्हारे बनाने के पहले अगर मैं कस्टमर नहीं लाया तो आई एम आउट, मैं ये भी बोला if I am taking the sales, let me put myself to sales. Yes. अरुण जब आया तो अरुण ने बोला कि I will get you the first ISO certification in 45 days. बोला 90 में करो, कराया हमने। हाँ, एग्री दोनों एक साथ चलते हैं, मतलब आप अकेले तो काम कर नहीं पाओगे, नहीं तो वो छोटा वो दुकान हो जाएगा आपका। हम खोजते इफ बिकॉज आई वॉज इनटू इट, नहीं मिलता तो हम छोड़ देते, क्योंकि एक तो मैं भी बना लेता था, बिकॉज फर्स्ट वर्जन तो मैं ही बना रहा था बैठ के, है ना। बट आई नो दैट आई कैन नॉट बी प्रोडक्ट सेलर, मेकर एंड एवरीथिंग, देन आई एम डूम्ड टू फेल। The first thing customer or investor sees is how many people are there. दो भाई हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। There should be two people, एक भाग गया तो दूसरा बैठेगा, because end of the day somebody pays us the money, there is a value. तो मैं राइट पार्टनर ढूंढता, और को मेरा कोई, और को मेरे से 15 साल छोटा है, is not even in the generation where I belong. I am a 73 born guy. He is 85, उसके लाइफ की फिलॉसफी अलग है, वो एकदम कंप्लीटली डिटैच्ड हर चीज, बट ही इज अ ग्रेट टीम मेंबर बिकॉज उसको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। और को हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, वो मेरे लिए छोटा भाई जैसा है, मतलब बैठता नहीं है मेरे सामने। सर अरुण इज मोर कॉन्टेम्परेरी टू मी, मेरे से 2-3 साल छोटे हैं। अरुण इज डिफेंस गाय, ही कैन सी रिस्क एनीवेयर, मतलब यहाँ से आग लगेगी तो भागो कहाँ से। इफ ही एंटर्स इनटू द रूम, ही विल सी द फर्स्ट थिंग कि आग लगेगी तो निकलेंगे कहाँ से, ये बताओ। तो when I am building a cyber team, I need these skills. तो वो मैंने पेपर में लिखा, फिर अपने दोस्तों में नाम काटने शुरू किए, कौन ही आ सकता। एक से एक टैलेंट वाले हैं, मतलब एक रंजीत है जो कि इंटेल का चीफ सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, बट उसको प्रोडक्ट बनाने में 3 साल लगता है, बोले तब तक तो कंपनी निकल जाएगी, वो इंटेल के लिए अच्छा नहीं। वाज हेल्प बेंट के आई विल जॉइन, बोले रंजीत नो, नॉट यू। And he is still a friend, but heartbroken friend. So मैं बोला I need somebody who can build it, think it, because it's a startup. To me 1 week is like 1 year, right? मेरे को कोई दोबारा थोड़ी बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, मान के सोचो। तो I have to be first time right in the shoestring budget, और जो है ये दुनिया का बेस्ट बंदा है, ये कॉन्फिडेंस। तो हम इस 3 में हम लोग बैठे, we are still together, great। अब हम फ्रेंड बने यार, और को तो अभी फ्रेंड नहीं है, उसके सारे फ्रेंड सर्कल अलग है, हमारे अलग है, और हम और उन थोड़ा ज्यादा क्लोज, मतलब और को अभी मेरा मतलब इज लाइक यंगर ब्रदर, बैठता ही नहीं मेरे सामने, बोले नहीं सर आपके सामने खड़ा हूं। तो ये कहानी। तो जो टीम चूज करें, बी क्लियर, बिकॉज यू आर बिल्डिंग ए कंपनी, यू आर नॉट बिल्डिंग ए फ्रेंडशिप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन रहा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता वो स्टेल वाला, और उसमें इट्स ओके टू टेल माय यंगर ब्रदर इज एन इन्वेस्टर इन दिस कंपनी बट ही इज नॉट अ फाउंडर, राइट। एंड आई एक्सप्लेन टू हिमांशु, यहाँ सर से मिले हुए हैं, बोला भैया मेरे को इससे नहीं करना, आई लव दिस आराम वाला कॉर्पोरेट लाइफ, बोले गुड यू स्टे देयर। तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रॉब्लम कस्टमर, मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड टू कस्टमर, नॉट अस इन माय माइंड। सेकंड टीम, दिस टू सॉल्व कर लें आप, इजी टू गेट अ फंडिंग इन 90 days. So then you can articulate the problem, you have somebody to solve it problem, and you have built a MVP, and you have a customer who is paying you at least 5,000 rupees for that. बोलिए। इस मेंटेलिटी को कैसे शुरू करेंगे? देखिए और हमारे साथ सब कुछ काम करना है, इनको हमें इसको ताकि वो काम से रोक आउट पोटेंशियल मतलब संस्था में हम उसके बाद मुक्ति और मैंने इसमें हम तीनों ही ओनर है ना इसके, we 3 are co-founders of this। तो हम में, अरुण में, और को में कोई डिफरेंस नहीं। We draw same salary every month। हमारी प्रिंसिपल है
कि जो फाउंडिंग टीम है जिसने सबसे ज्यादा पेन दिया है उसमें कभी डिफरेंस नहीं होता है। स्टेक में डिफरेंस है, कोई मेरे पास कुछ ज्यादा, कोई मेरे पास शुरू से है ना, बट विच इज फाइन बोथ ऑफ देम, बट वी ड्रॉ सेम सैलरी एवरी। वॉट एवर डिसीजन हैपेंस, अगर कुछ काम उन्होंने मुझे अथॉरिटी दिया हुआ, कुछ काम उन्होंने उनको अथॉरिटी दिया हुआ, कुछ और का, बट एनी क्रूशियल डिसीजन डेफिनेटली डिस्कस अबाउट कि ये कर रहे हैं कैसे। So that is called trust building in the team. So that is the first step. When you get the founders, you see that how hungry he or she is काम करने के लिए। हाँ, अगर उनके मैंने कि मैं अलग से कर लूंगा तो he is not your co-founder. He is just here to take your technology or idea and run away. लेकिन वो नहीं होता है, आप बात मानो। जैसे मेरे को लोग बहुत बार बोले इसको दिखा दो, कॉपी कर लेगा, बोले इतना आसान हो, सारे कॉपी कर लेते हैं, करा दो, मैं देखूं कॉपी कर लेता दिखा दो। अगर इतनी इजी टेक्नोलॉजी है तो करो मत। व्हाट वी कॉल इज टेक्नोलॉजिकल मोट। जैसे आपको जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया, इसका जो कोड है पिछले, वो बहुत डीप कोड है, उसको आप तो हमारे 15 लोग की टीम है। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, आपको बताते हैं। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कोड, देयर इज अ फजिंग देयर, है ना, और इंटीग्रेशन सिर्फ ऑर्को करता है, मेरे को भी नहीं पता होता है। आई एम द सेकंड ओनर ऑफ दैट, कि अगर ऑर्को किसी दिन भगवान अगर कुछ हो जाता है तो वो विल कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यूटी किया हुआ है। मुझे कुछ हो जाता है तो ऑर्को कैसे चलाएगा ये, तो देयर इज अ मेथड यू कैन डू दैट, राइट, वो मैं बता दूंगा आपको ऐसे ही। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि द ट्रस्ट इन द टीम बिल्ड्स ब्रेक्स इन बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स। वन, यू आर नॉट ट्रीटिंग पीपल टुगेदर। I always come कि this is my way यार, तुमको करना ही पड़ेगा। No, very no. Nobody will work. Third, we start hiding things from each other. If I don't have a heart to take a no from you, I am not your friend. I am not your partner at least. How many times this guy come in like, Divyanshu, this was completely wrong. Okay? बताओ क्यों है? समझ गया? फिर मान लिया कि yes, it was my mistake. We hired a consultant, ex-army officer, who did not do anything. I paid him 2 lakhs rupees. Then I fired him. बोथ बोले कि दिव्यांशु कुछ कर ही नहीं रहा है, लड़कों मैं बाहर फायर करता हूँ। I fired him just because they were not happy and they were right. I told you it's my mistake that I trusted that guy too early. तो जैसे हम एवरी माइलस्टोन के बाद हम एक इंट्रोस्पेक्टिव सेशन करते हैं, सिर्फ 3 के बीच में। कभी कभी एक हमारे मेंटर है राम कृष्ण, वो सीनियर डायरेक्टर है HP एंटरप्राइज, उनको बुला लेते हैं। इट इज नो डिफेंस, एनीबडी कैन से एनीथिंग, and the people who say are very nice, they say no professional way, not that shouting and all, but we call out कि अरुण यहाँ पे you improve, and each 3 of us do. Rama listens, Rama takes note, and Rama subscribe करके उसका एक एक्शन प्लान बना के उसको फिक्स करो। पर हर स्टेज की कंपनी में जरूरत अलग अलग है। जब हम छोटी कंपनी थे, स्पीड बहुत जल्दी था हमारा, मतलब जल्दी करना है, 5 कस्टमर ढूंढने हैं। अभी क्या है कि वी हैव अ गुड स्टेक, मतलब if something goes wrong, I have burnt $500,000. No, not possible. I have to slow down. I slowed down. Now I take my own sweet time to decide the thing, because I know by nature I am fast decision maker. कर दो, which was good for a certain stage of company, अब नहीं अच्छा। Because if things go wrong, the cost of going wrong is higher than winning. जैसे अगर प्रपोजल गलत हो गया तो ONGC का 1.5 करोड़ का ऑर्डर चला जाएगा। पहले 6 लाख रुपए का ऑर्डर था, ठीक है, या दूसरा आ जाएगा, अब कहां से आएगा? एक ऑर्डर क्यूरेट करने में 3 महीने लगते हैं, 90 डेज लगा। तो आई हैव स्लोड डाउन। दिस ऑल आर फीडबैक्स। अरुण को बताया कि तुम जो है इस तरह से, तुम्हारा अरुण को फीडबैक दिया कि तुम्हारा काम पूरा फिनिश नहीं होता है, थोड़ा बचा रहता है। ही स्टार्टेड टेकिंग ए नोट कि टिक टिक टिक, बोला कि मैं एक चेकलिस्ट बना, हर काम को ब्रेक डाउन करूंगा, 20 स्टेप्स हैं, टिक 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 करेंगे, तुम लोग देख लो उसको। सो दैट ऑनेस्टी यू हैव टू बिल्ड एज ए फाउंडर। उसमें थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ यस, जैसे सब कह रहे हैं सर कि हर कोई मिलकर डिसीजन लेता है, एवरीवन इज फ्री टू स्पीक, तो ये तो आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करके So this maximum share used to be with me, then we distributed it out. Criteria was again, see, I started this company with 1 more director. Orko was not that time, so I had maximum, which when Orko joined, I gave him half of it.
When Arun came, we make it 1/3. Told that since we all three of us are there, we are building it together day in day out. We have the choice. That's fine. There are some guidelines. Normally, see, again, I told you there are two things. If you wait for something to fail and check, you will lose. We have a management meeting every day at 12, half an hour. दुनिया में कुछ भी हो जाए वो मीटिंग हो जाती है, क्विक हो जाती है. वी टॉक, अरुण कैसे चल रहा है, दिव्यांशु कैसे चल रहा है, क्विक क्विक कुछ होगा उसमें ओपन है, आप आराम से बात कर लो तो सॉल्व करके निकल जाते हैं. ऑनलाइन. अरुण स्टेज इन दिल्ली, I and Orko are in Bangalore, and I mostly travel because I am the sales guy. So we just quick up, log in, Google Meet, टक 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 बात किया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जो फीडबैक है बता दिया, करते हैं. No, the investor, no, not. So you should choose who is the CEO as based on skill. Yes. So why didn't you build a CEO thing early? तो फिर क्या हुआ? तो देखिए, मैं आपको क्या बोला कि जब आप मान लीजिए दो फाउंडर आते हैं शुरू में, है ना, जैसे मैं और आपको आए, तो you can figure it out and see what his problem is. This guy who is the CEO, that is me, is not the most empowered guy there. This is a myth कि मैं CEO बनूंगा तो मैं सबसे powerful guy हूँ. Actually, I wanted to become the CTO. लेकिन सेल्स कोई करना नहीं, हो नहीं रहा था, तो मैं बोला को मैं वो करने. तो जो कोर फाउंडर होता है या दो लोग हैं, उसमें से एक को सेल्स और एक को प्रोडक्ट में करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या बनेगा और क्या किसको बिकेगा. तो ये रोल पहले डिसाइड कर लो. उसको आप ये करो कि आपको दिख जाएगा कि कौन बंदा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कौन आर्टिकुलेशन कर रहा है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर बैठा हुआ है. आप यू कैन फाइंड, इट्स वेरी ऑब्वियस, यू कैन टेक मी, एंड इफ यू nobody is doing that, one of you have to do that. So to me, sales was learning thing. I know I have good connects, and I was the main guy with the idea. So I have to either choose a CEO role or a CTO role. और को मैं बोला तू CTO ले ले, बोला सर मैं CTO ही बनूंगा, because I can build it fast than you. बोले that's what I know. Younger है तुम, ज्यादा कोडिंग करते हो मेरे से. You become a CTO. So I then pack the bag and start talking to customers as much as possible. And that doesn't mean that Orko doesn't go to meet customers. Many times two of us go, either I or Orko. It is possible to get the fund. Good. That is best. Best money. That is the best money. That makes your valuation go up. Same with us. After a certain time, because we needed some people to develop, we say now customer money is coming, then let's use it. But always remember two things. The investor money helps you to grow fast. Because once you have done something, जैसे अब हमारे 4-5 कॉम्पिटिटर हैं, एक तो जिसको निकाला था वही है, उसने कुछ किया नहीं, अलग बात है, बट उसने कंपनी बना दी, सेम चीज कॉपी कर लिया वेबसाइट से, ठीक है, करने दो, इट्स ओपन मार्केट, कैन नॉट स्टॉप, could not get a customer. But if you are solving it and you are the only one, it won't stay long for you, won't stay long for therefore. So that's where the initial stage, your growth also matters. How much market you can capture. नहीं तो what are startups and many people become living dead. What we call. दो कस्टमर हैं, उसी में लगे हुए हैं, आप सब कर रहे हो, तो स्केल नहीं आता. स्केल नहीं आता है तो इन्वेस्टर जो बड़े सीरीज ए में, हमारा प्लान है 2024 के एंड में सीरीज ए करेंगे, तो बिग सीरीज ए, उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर कर, जल्दी नहीं होता. उसका स्केल चाहिए, 100 करोड़ हमारा ARR थी रेवेन्यू में. That is close to 10 to 12x which I am doing right now. लेकिन हो जाएगा, दिखता है कि अगर ऐसे ऐसे करते गए बन जाएगा. ONGC है, IGL है, IPL, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, HPCL, उनसे ही काफी हो जाएगा. But to do that, I have to build a product. That's where investor helps. So what investors see is, I told you two things: problem, scale. It is a $1 billion, multi-billion-dollar market or not, because not one company will take everything, right?
you have to be in top 3 players, let me say that, 3 to 4 players. अगर वो $100 billion या $20 billion का मार्केट है तो आप 10 to 5% आप जोड़ो, उतना आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप उसमें हो तो इन्वेस्टर्स लव इट, उनका कम पैसा बढ़ाना है, राइट? मल्टीपल 10x ग्रोथ, 20x ग्रोथ, जो भी उनको मिलना है। मैं सिक्योरिटी पे आता हूं, मैं तुम्हारे साथ I'll sit with you, let me finish this मैनेजमेंट वाला चीज, then I'll talk about security, yeah? Just give me some time, तो मैं इसको इस लेन को खत्म कर देता हूं। I am a guy called one bite at a time, एक बार मैं एक ही चीज करता हूं तो चलता नहीं फिर मेरा दिमाग। तो what I was trying to tell you is that कि first 100 days, first 1 year, 365 days में, if you go with the genesis, what I was trying to tell you with my experience is idea that has a customer, team which can build an MVP and stay, which you can showcase in front of customer or your investor. The choice is this. Once you have that, get invested. क्योंकि जैसे एटलीस्ट मेरे केस में, जो B2B के केस में है, 1 order takes 90 days or sometimes 120 days. Order size is very big, like close to, now we are getting something $1 million on the order, बड़े order size होते हैं, 10,000 डिवाइस है किसी स्मार्ट सिटी के वहां पे बुक करना, बट उसको बनाने में टाइम लगता है ना, क्वालिफाई करो, ये करो, वो करो, so many things. So once you are invested, you can keep your engine running, like product engine running, right? वो भी तो जरूरी है ना, प्रोडक्ट में फीचर आया कुछ करें तो if I would have been showing him the same CCTV, क्योंकि भाई CCTV के अलावा भी दुनिया है, right? तो we build all this with this 15 people team, right? और अभी इसमें 6-7 और आ गए, ये X-1 है जो करंट वर्जन है, वो इससे भी आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो वो आपको फिर वो आपका कस्टमर भी देखता है। आपसे ONGC के पास गए, हम गए CCTV के लिए, उसने बोला एक्सेस कंट्रोल भी करना है, मेरे को सिस्को फोन भी करना है, 6 और डिवाइस दे दी। Each device is a money for us. Let's go. That's where you need money, investor money. Quickly I can hire 5 more people, good people. Start building it fast, because to me, if I put X, I'll get 5X back. That's where investor and scale helps you, and you become the market category leader, what we call product category. जैसे इसमें अगर आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, nothing to boast, but एक बताता हूँ, देख रहे हो, ये स्पॉन्सर्ड है, ये हम है गूगल सर्च में, 0 SEO है बॉस, जो है सब मतलब इनबाउंड अपना एकदम नेटिव ट्रैफिक। हाँ, इसमें कोई था नहीं, हम लगाओ जितना बेच सकते हो। तो that helps. These are small KPIs, but it helps you. It helps you only when you have manpower, you have a scale to do that, right? है ना? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे क्वेश्चन। सिक्योरिटी पे आता हूँ, उसके पहले कोई कुछ पूछा यहाँ पे। चंद्रशेखर जी कुछ very valid question, दोस्त, very valid question. This is one question which keeps me mostly awake in the night, कि इस आदमी से मैं पैसे लूं कि नहीं, पैसा दे रहा है तो क्या ले रहा है बदले में। अब ये केस बताऊं, नाम नहीं लूंगा, he was almost there to get us sold to Israeli company. मैं उसको देखा कि हर बार मेरे को आर्मीज की साइट पे लेके जाता है, बोलता इसमें तुम कैसे फिट होगे, बोले इसमें मैं फिट हो ही नहीं रहा हूं। बोला क्यों? क्योंकि मुझे फिट ही नहीं होना यहाँ पे। They have invested in Sentinel, they invested in Artemis, they are big VCs. उनके लिए ये ठीक ठाक एक बेसिक बना हुआ 10 कस्टमर वाला प्रोडक्ट था, जिसको स्केल कर लेंगे बिठा के हम आदमी। So that is the question which keeps me awake. So our rule is simple, at least in my case. I only take the money from the people I know for at least 10 years. VC है तो उसमें किसी एक को मैं जानूंगा, या मैं गवर्नमेंट के पास आऊंगा, या कुछ ऐसा कनेक्ट होगा जिससे मेरे को इंसाइट मिल जाएगा। नए लोगों से
अब नहीं करता। शुरू में छोटे फंड थे तो किया हमने, फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड किया था उसमें भी। बट इस समय मैं ये पूछता हूँ कि भाई इफ यू कम एज ए इन्वेस्टर व्हाट वी आर गेटिंग इन। If the investor is very pushy on exit option, I am very scared. Why he is always talking about, he or she is always talking about exit kaise karoge? That means he or she is in hurry, which I am not. I am here to build this company in 7 to 8 years, God being kind, Jai Ganesh, $1 billion. That's my mindset. भगवान अब आगे कितना कराते हैं भगवान की इच्छा जो भी है, ये हमारा काम मेहनत है. तो if somebody जो अभी हमारे इन्वेस्टर हैं, they say no, we will do series A for you, series B for you. So they are saying okay, we will grow with you. तो ये आप थोड़े थोड़े जब बात करोगे ना, every investor talks about exit option. I say it can be an IPO or a private limited company giving you dividend, and you can have an exit when you want. 4 years down the line, will give you 10x, 20x return. You come out. If they are too much into competitive analysis, I have a question that what are you trying to understand? तो मेरे कॉम्पिटिटर आपने जान गए, चलो मैं दिखा दिया. अब आप अगर ये देख रहे हो कि मैं उनके साथ कैसे फिट होता हूँ, then I have a problem that करना क्या चाह रहा है, which you told. So I'm very like kind of guarded on that. Take my own sweet time to respond. Take my own sweet time to say yes or say no. चुपचाप बैठ गया, all good. आप पूछ रहे थे? आपके साथ ही मुझे सीपीओ में जाना था. तो प्लीज यार आपको ऐसा नहीं मैं ऐसा करता हूं तो क्या उसके लिए भी कुछ अच्छे से डिस्कशन होती है? हाँ, मैं अपना आइडिया जो देखिए, हमारे यहाँ एक रूल है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, बट वो उनको पता है कि दिव्यांशु अगर दिन रात सेल्स कर रहा है तो आई माइट हैव थॉट अबाउट इट, राइट. दो प्रोफेशनल क्या होते हैं, मतलब इफ ए डॉक्टर हैज सीन 100 पेशेंट्स लाइक दैट, सो दे वुड नो व्हाट यू आर थिंकिंग. तो बात आप कर सकते हैं, बट फाइनली द बक स्टॉप्स फॉर दैट फंक्शन विद दैट गाय. जैसे इंप्लीमेंट क्या करना है वो और को मैं प्रोडक्ट आइडिया दे देता, कैसे करना है और को ही डिसाइड करना है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं. आइडिया आएगा बिल्कुल. अभी हम काउंटर ड्रोन पे भी काम कर रहे हैं, हमारा एक कहीं ठीक ठाक पीओसी हो गया है, तो उसको मैं लेके आया और को बोला सर इसको ऐसे करते हैं, बोले तुम यू आर द गाइड टू डिसाइड इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इज अ गुड मार्केट. फिर हम बैठे, हमने मार्केट स्टडी किया, बोला सर और कुछ डेटा लेकर आओ, फिर डेटा दिखाए, शुरू करवाया. तो 2 इंजीनियर्स असाइन टू दैट. अभी समथिंग मोर वी आर डूइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी आर ऑलवेज ओपन टू द आइडिया. ऐसे मेरे को बोला सर आपका ना डिजिटल चैनल अभी अच्छा नहीं है, ग्रेट, तो क्या करें? आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन डिजिटल सेल्स, एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन सेल्स बट आई डिड इट. तो बोला कि सर आप ना थोड़ा सपोर्ट ले लो. तो आई फाउंड अ मेंटर नाउ जो हमको डिजिटल सेल्स के बारे में बता रहे हैं. तो ओपन, बट फाइनली आई विल डिसाइड हाउ विल सेल्स, राइट. सो वी हैव दिस वन लीडर पॉलिसी, एक जो फंक्शन लिया, सो दैट ओनरशिप इज क्लियर. क्लियर? बिल्कुल, सबसे ज्यादा पैसा उसमें लगता है. बहुत पैसा लगेगा ट्रैवल में. सो इंडियन इकोसिस्टम में मैंने देखा डिजिटल सेल्स अभी भी, टाटा स्टील का सीसो मेरा साइट पे आएगा, बट कितना टाइम देगा, कितना देखेगा, मे भी नहीं. तो वी डेफिनेटली लुक फॉर. तो हमने पाया कि जस्ट टू गिव यू द जेनेसिस, स्केल का जेनेसिस, दिस इज द थर्ड एंगल व्हिच इज गुड दैट यू ब्रॉट आउट, कि टीम बन गई, कुछ प्रोडक्ट आ गए, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट भी आ गया, कुछ कस्टमर स्केल के लिए. So we realize that we cannot reach everybody in the world. We have to create a partner ecosystem. तो हम फिर गए ड्राइंग बोर्ड पे, मतलब that's the way we do. पार्टनर प्रोग्राम आप जाएं, अभी इसमें कुछ काम नाम कम है. ये देखिए, ये है बड़ी कंपनी है, GMR 50,000 करोड़ कंपनी है. ये $20 बिलियन की कंपनी. ये महिंद्रा, ये छोटी कंसल्टिंग कंपनी है बट वेरी निश, स्विस बैंक में. ये एक सर्टेन सर्टिफाइड ऑडिटर कंपनी है साइबर सिक्योरिटी की. कुछ नाम हमने जान के नहीं डाले हैं बिकॉज उसको नहीं डालना था, बट वी रियलाइज दैट वी आर न्यू, आवर प्रोडक्ट इज न्यू, सो 2 न्यूज आर डेफिनेटली गो टू फेल. लेट अस फाइंड somebody who already has the trust. Mahindra has a lot of trust. They have been doing CCTV and other devices for the smart city for a long time. Alfutem is a $20 billion. They own half of the Toyota retail
and CCTV market of Middle East. तो हमारा प्रोडक्ट चूंकि अच्छा था, हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने मीटिंग करते करते CCTV.ae लॉन्च कर दिया। आपको दिखाता हूँ, मैं उस पे आता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट पे आता हूँ। आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल डू द गुड सेल्स पिच, डोंट वरी, आई एम अ सेल्स गाय। सो अभी मैं आपको पहले अपना स्ट्रेटजी बता देता हूँ, सो दैट इफ सम ऑफ यू वांट टू कॉपी इट, कैन डू दैट। या नहीं, तो ये देखिए रेडिनेंट लिखा हुआ है ना, ये जो हाँ है ना, ये हमारा ही है, तो अल्फोतेम टेक्नोलॉजीज कंपनी, तो ये 20 बिलियन की कंपनी है। तो अब मैंने दिया यार, अगर सर हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो टेक डोंकी इयर्स टू गेट फर्स्ट कस्टमर। Let us go to the people who know the market, but they don't have this. They have trust. They don't have this. Give it to them. Let them add 20% of profit, 30% of profit. Help them to sell. They will sell. So we now then build a good partner ecosystem. Last year पूरा इसी में गया हमारा। तो हमने एक अच्छा पार्टनर इकोसिस्टम बनाया कि अभी हम इंडिया के किसी भी सिटी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में कहीं भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी मैं होके आया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बुलाया था, वहां भी हम बोले भाई हम तो इंडियन आदमी है, हम तुमको 2 ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वाले दे रहे हैं, ये हमारी कंपनी, ये हमारा इंप्लीमेंट करेंगे डिफेंस ऑफ के साथ। स्विट्जरलैंड में एवरीथिंग एंड्स विद कंसोलर, तो दे हैव द राइट टू सेल द प्रोडक्ट इन दैट जोग्राफी बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग। सो टू अस न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपनी, डूम्ड टू बी फेलियर, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन इनको कन्विंस करने के लिए फर्स्ट 7 कस्टमर्स मैं खुद लेकर आया, भाई इनको भी तो हिलना है, इनको भी तो विश्वास करना, महिंद्रा वाला अपना टाइम क्यों दे, तो नहीं देता। बोले ये देखो भैया, ये 80 लाख का ऑर्डर था, आपको नहीं मिला, मैं ले रहा हूँ। Then so Divyanshu, this is really wrong, दे दो, बोले ना तो ये तो तुमको नहीं दो, you find your customer. So then they moved on. So now we have a good partner ecosystem. जैसे ये डॉल्फिन है, they are looking into, they are service provider in Taj, Oberoi, Brookfield Property, Airtel Reality, ये सारा ये देखते हैं। महिंद्रा डिफेंस का स्मार्ट सिटी का बिजनेस काफी बढ़िया हमारे साथ, ये लोग पूरा मिडिल ईस्ट करते हैं, ये एयरपोर्ट में साथ काम करते हैं, ये स्विट्जरलैंड में करते हैं। तो ऐसे करके हमने बोला लेट अस गो, बिकॉज B2B सेल्स खास करके ट्रस्ट होता है। इफ यू हैव वर्क विथ मी फॉर 10 years, आई विल लिसन टू यू, अदरवाइज तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। तो वी थॉट कि बॉस, न्यू कंपनी, न्यू प्रोडक्ट, नॉट सेलेबल, गिव आउट 30%, लेट देम टेक इट, बट लेट देम गो बिकॉज दे हैव एन एक्सेस टू द CISO। मेरे को we also did for MHA, actually SPG, तो ECIL हमारा पार्टनर बना है। तो ECIL has been providing CCTV security and device security for airports, scanner। तो उन्होंने प्रोडक्ट बोला ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, तो बोले सर चलो, तो तुरंत MHA में घुसा दिया, हमें ले आके चले गए हम लोग वहाँ पे। जॉइंट सेक्रेटरी को बोला इसको ट्रायल करा दो, तो सर कहाँ ट्रायल करा दूँ, बोला SPG में करा दो, बोले सर तो बहुत बड़ा है, तो नहीं चलो, we went and did and we showed them that what wrong, that we cannot discuss it, but so partnership, partner ecosystem helps you to propel that. It's okay to share some benefit with them. So that is a trust standard, because they have a trust with the end customer. You are a startup, they are not. Mahindra is not a startup, right? They're like there for years and years. Alphatem is 80-year-old company. They are into Harvard case study and all. We should build something which they have a value. अगर मैं उनको CCTV भेजना तो भाग जाओ यार, तुम्हारे से 500 घूमने है। So we chose an area which was niche and complex. What you told, copying is not easy. दिखा दो, मैं तो खुद दिखाता हूँ ना, पड़े दिखा लो, कॉपी करना कर लो, आपको पता नहीं चलेगा इंजन के अंदर हो क्या रहा है, ये सो कॉम्प्लेक्स। फिर हम उसमें पैटेंट लिए हुए हैं, हमारा कॉपीराइट्स है। तो दैट अरुण टेक्स केयर, हाउ डू यू सेफगार्ड एवरीथिंग, दैट कंपनीज IP स्टेज विद अस, प्रोटेक्टेड है। तो ये हमारा सेल्स का स्ट्रेटजी। This strategy till now has worked well, very frankly. Partner का growth थोड़ा slow हुआ शुरू में, because I also could not understand कि why is Alphotem not selling. But then I realized that Alphotem will not sell till that time I gave them the confidence that it is sellable. They have signed MOU with 100 companies, I am in the 101. So then I saw when we did Abu Dhabi Police, Ministry of Interior and World Trade Center there, उसमें से एक order आ गया Abu Dhabi Police का. Now they are on fire, because they can keep showing it and do that. तो अभी ये ONGC का हमारा हो गया, तो अब वहाँ पे जो हमारे पार्टनर है उनका नाम यहाँ पे भी नहीं आया है, जो भी पार्टनर है उनको नाम लाइक NDA तो हम नहीं कर सकते, वो अब IOCL, BPCL, HPCL ये नेक्स्ट लाइक 90 डेज में हमारा करा दें। सो एज अ सेल्स गाय, I am not sleeping
just because they are there. I have to lead the way so that my partner has a confidence, because my partner was there before my company got started, right? Mahindra था, मतलब अल्पोदयम था और मस्त चल रहा था. मैं आगे बोल रहा हूँ कुछ नया कर लो. So I have to show them. So that's the other thing your CEO or sales head has to do. Not blame partners because you're not selling. Partner has no time for you. Till date they see the dollar value or money value. Whatever you do. अगर आप supply chain कर रहे हो, sales channel कर रहे हो, offline कर रहे हो, you have to knock the door. Once you take the lead, they will follow it. Because they don't want to lose their annually or 10 years trust they have built in some big company just because one product was. So that was the second learning we had. Okay, how do I accelerate the sales? Now at this point we told, okay, now maybe next year 2024 we will withdraw ourselves for most of the sales except for Ministry of Defense and all strategy जो हमारे साथ ही काम करते हैं directly, and help our partners to go and sell, so that we at the core remain a product development company. That is my learning from Indian market. There are a lot of system integrators. L&T hai, Mahindra hai, Tata hai. They take their tens of them. But deep tech product Israel से ज़्यादा बनता है. हमारे मैं 16 साल इजरायलियों के साथ काम किया हूँ. That's why I became very loud. They keep shouting. They're much like Bihari sir. तो मैं 16 साल काम किया हूँ. तो one thing is a company of 90 lakh people. Can you imagine 90 lakh only? और हर आदमी तो वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है ना, बाकी जो काम चल रहा है ना वहाँ. They have the maximum export on cyber defense and cyber security and defense. Why? Because they learned one thing: do one thing great, build great products. Once you build great products, there is customer, there is a need, there is a... So a lot of motivation came from them, or to understand their how does us. Because to me, they're called Startup Nation, by the way. There's a book called Startup Nation. If you want to read it. It's like 90 lakh, छोटा सा country है, लेकिन इतने प्रोडक्ट कैसे बना देता है? बेस्ट मिसाइल्स, बेस्ट साइबर सिक्योरिटी, बेस्ट आपको क्या कहते हैं, तो वाटर में भी आ गया, ड्रिप इरिगेशन, बिकॉज दे पुट देयर माइंड ऑन बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड दे हायर एन अमेरिकन टू सेल. बिकॉज इजरायलीज की जो बिहेवियर होती है वो इतनी गंदी होती है कि मतलब इसी पे भी हाथ वाथ मारने लगेगा, कब भी फेंक देगा. मतलब दे आर लाइक रैश पीपल. They say that how do you get attention? Fire 2 shots in the air. It's like, बोले यार हमारे बेगूसराय में भी होता है. I'm from Begusrai, so I have very close friends in Israel. So like we have similar behavior. So you kind of take that thing, and then so that's what I learned, that we in India don't have great products. So I told, let's at least invest my lifetime or whatever I could do to build product, then go to the ecosystem. Systems are great people because they are taking the customer, the solution to the last mile. Customers, ONGC, well, thinking that, okay, ONGC can even let me sit in their office next to the CMD's office, ED security, and he will talk to me is a big thing. They're like Fortune 100, right? But they are open once you have a kit. So in summary, I'll stop after this. In summary, first 365 days, right? Product idea, validated with customer. Team. I will say raise fund if you have to grow fast. Don't say कि नहीं मेरा इक्विटी चला जाएगा, जाने दो. एक आपको कभी दिक्कत हो तो आप देखोगे फेसबुक में मार्केट की इक्विटी बहुत कम है, मतलब सबकी इक्विटी कम ही होती है. Because then it's scaling. Then you can create a big one. Then sales support. After you have crossed, मतलब जैसे हमारा लग रहा है कि close to, like we do probably once we reach $100 million valuation, which is like 100 crore revenue. If we 1.5 साल लगेगा हम लोग को, 1.5-2 साल. Then you have crossed the value of that. Then you can scale further. There's a different strategy. I'm not the best guy on that, so I'm still have to reach there. So मैं आपको अभी तक की first $1 million की जर्नी बता सकता हूँ. How do you get your first $1 million revenue or 10 crore revenue? That we know how to do that. उसके बाद you have to plan differently. Maybe I get a sales guy of Wipro who had sold to so many multinationals. So that's a strategy I have to think that, okay, what is my role? Because then I have to get the best sales guy, and how come and sales there, best architect who can work in the art, best operations guy. But right now we cannot afford that. So ये अगर आप first year में कर लेते हो 365 days में, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, first round raise कर लिया, which should not be the grant, which should be a proper VC or some investment platform जो कि आपके idea को validate कर देते.
You have somebody to show that okay, ये इन्होंने पैसे डाले मेरे पास, 2 करोड़ रुपए डाले, 200,000 डाले, 500,000 डाले, वहां पे मिलियन डाले. So then you are validated. The second guy when he comes, he looks at your growth. If you have grown, he gives you the money. If you have followed the path, he gives you the money. If you have not, then obviously you have a homework. This is your first 18 months journey. 18 to 24, it's about reaching to coming out of valley of death. Because after 24 months, your novelty factor goes down. Because अगर मैं नहीं करता रहूं अगले 4 साल तो it's like stale, right? Nobody has interest. So you have to keep innovating on your side. Either your innovation is product, services, or operations that you have to figure. 3 things. Once you do this, website important, but collaterals very, very important. You see my collaterals, they're like world class. बिल्कुल installation sheet, product catalog, product brochure, पैसे देके बनवाया, बिल्कुल एकदम finished. कि जब वो भेजता हूँ, प्रोडक्ट एंट्री तो बाद में होती है, पहले इनकी एंट्री होती है, कोई पढ़ता है ब्रोशर, लाइक वर्ल्ड क्लास, पीओ जाता है, फॉर्मेट है. तो वो जो तैयारी होती है जो यहाँ आप करवा सकते हो, वो समूह की करवाओ, राइट? हाँ, शेयर्ड सर्विसेज में आप करवाओ. If one guy who can serve to all of you, you can pay little money, so that your, कहते हैं ना कि जो प्रोडक्ट की तैयारी है, बियॉन्ड प्रोडक्ट, जो पैराफर्नेलिया है, वो कम नहीं होना चाहिए. Then you can talk well. Then you sit on the high table. We face this. We send a catalog like ये catalog ही नहीं है तुम्हारा. मैं बोला हाँ यार catalog तो बनाया नहीं, हम तो ऐसी बात करते रहते थे. फिर जल्दी करके बनाया, वो अच्छा नहीं था. फिर बोला सर will take some time. The startup को थोड़ा सा कहानी देके बताया, तो वो रुक गया. फिर हमने पैसे देके 2-3 वीक में फर्स्ट वर्जन बिल्कुल नाइस पॉलिश्ड अडोबे के सारे टूल्स लगवा के पैसे देके बनवाए. अब जो है वो it has gone to Ministry of Defense, it has gone to Alfutem, has gone to Nuam City, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट स्मार्टेस्ट सिटी है सऊदी अरेबिया. They have all, अब जाके इस लेवल पे है कि I can show this document, इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, सपोर्ट डॉक्यूमेंट, मॉडल क्या है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड. दैट्स स्केल. दैट आप 1 दोगे चाहे 100 दोगे, आपको ये मिलेगा. तो then people don't see you as a startup. See, what was our problem? That what I wanted, product and our paraphernalia should remove the focus that we are a startup. Then they start treating you with respect. Then you can charge money. Otherwise, छोटू है, उससे निकलना. तो we did everything out. बाद में बोले भाई अभी मतलब तब तो हम लोग बहुत छोटे 4 लोग ही थे. तो people discussion will have the last. But everything else will show proper करके. तो ये कहा. यहाँ जब आप पहुंचते हो, तो sales becomes very autonomous. आपके पास किसी ने बोला, आप टक से उसको 5 मिनट के अंदर सारा डॉक्यूमेंट बना के भेज दिए, पिच डेक भेज दिए, आपका जो मॉडल है वो भेज दिए, आपका जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है वो भेज दिए. तो एवरीबॉडी लाइक्स इट एंड VCs सी दिस वेरी वेल. तो हमारे अभी VC है, वेरी बिग VC कॉल्ड Dallas Ventures. So they are preparing for, we are not ready. I'm thinking sir will take 18 months for Series A, we'll prepare for that. So they have put a lawyer with us to validate everything at my cost. I pay 35,000 rupees to the lawyer. That's a different thing. So that because उनका ये कहना है कि सब चीज अच्छा है, बट एक लीगल इशू फंस गया, they will not put the money. तो मेरी सारी तैयारी खत्म हो गई. बोले कि दिव्यांशु अभी से रखो, just budget it out, put that so that by the time you reach there, you don't have a bottleneck, you don't have a roadblock कि इसमें इनका जो ट्रेडमार्क था, which was already using something because I was a startup, so I just use this name. There is already trademark somewhere. No, don't touch it. तो ये जो पैराफर्नेलिया है वो आपके स्केल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स योर आफ्टर 18 मंथ्स जर्नी. जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, अच्छा इकोसिस्टम बना देते हो, आपका MOU डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉपर्ली वेटेड होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो उसको देखता है. उसके बाद यू हैव टू थिंक स्केल, हाउ बिग गाइस थिंक. जैसे कि आप टाटा के पास जाके गाड़ी खरीदते हो तो ब्रोशर देता है, राइट? You should have the same process. Then you are ready for the scale. Then I can say that I can go and bid. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या था, कोई कॉम्पिटिटिव बिड नहीं मिलती. Then we created an ecosystem of the people who can bid without competitive bid डाल सकें. 3 चाहिए होते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, हम तो अकेले हैं. Then we created that ecosystem. कि 3 लोग बिड करते हैं, उसमें जो लोअर होता है उसको मिलता है. The process, I have to follow that. तो अगर ये तैयारी नहीं हुई तो you start again remaining there. कस्टमर आ रहे हैं, 5 लाख ऑर्डर दे रहा है, कितनी बार 5 लाख ऑर्डर लोगे? Now we don't even touch that. बंद है ऑर्डर. अगर it's not 100K, I am not even looking to that because my next goal as a CEO is
get 5 to 7 orders which are $100K or plus. Then I am ready. I can bet for $1 million order someday, maybe 2 years down. Like हमारी भी तो growth दिखनी चाहिए ना. Then SoftBank और इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जो 1000 करोड़ दे. भारत बायोटेक उन्होंने मंगाया पूरा जो वैक्सीन है. But they would see that value in us. Otherwise तो बोलेंगे स्टार्टअप है इसको 20 लाख दे. उससे हमारा क्या होगा? तो उस लेवल पे आप पहुंचेंगे. It's a different strategy. But to me, first 18 months, 12 to 18 months journey, please अच्छे से करें. It's very process oriented. What I have told you, it's not rocket science. It's not kala jadoo. You start with something, problem, as I told you again, repeating on the problem that customer likes, plus team. Get first check that you already got it from here, which is good. But that is the check you got from the taxpayers' money. This is not a real check. Granted. Ek lo. It will prepare you like solid. Like, bilkul तैयार कर देगा आपको. मतलब I am a boxer, so I can tell you that. That will prepare you for boxing ring. Once you get that, your processes will be so cleaned out that you will never have a problem facing MC. Your team will be ready, your product will be ready, your brochure will be ready, your balance sheet will be ready, your business plan will be ready, everything is ready. Again, cookie cutting. आप इस बात में बात कर रहे हो, नहीं चले छोड़. Customer, first 5 customers जोड़ ला. At least B2B में. B2C में तो ज़्यादा उसका I'm not an expert, but I can tell you, more customer you have, is no brainer. They trust you. Keep billing very clean. Company के account से personal के लिए पैसे कभी मत देना. One audit goes wrong, out. Nobody touches you. The guy whom I fired, he did that. I told, how could you withdraw money just because you had an ATM card, a credit card, and a debit card, and you withdraw that? This is current account. यार company का पैसा ये. You have to file taxes with that. उन्होंने निकाल लिया. I got very furious. I heard, no, this got a board meeting and fired that guy. Because this is a private limited company, right? This gone under ROC. अगर एक गलत उसमें डाउट हो गया ऑडिट में, कोई भी टच नहीं करेगा. अभी ONGC या कोई बड़े कस्टमर मांगते हैं हमसे ऑडिटेड रिपोर्ट दो, मैं 4 क्वेश्चन मार्क वाले दिखा दूं, भगा देंगे और मैं तुम्हें यहाँ पे. So you have to be pristine. Last but not least, never lie. Okay to lose a deal, saying I'm not prepared, but never lie. ठीक है? I think I'll close my big talk and not. So any questions? More than happy to answer. Thank you guys. What is the ratio? मतलब ratio of what? यार दोनों ही बड़े हैं अभी तो. दोनों ही बहुत बड़े हैं. B2B में क्या है कि जैसे ONGC is at some day will be 100 crore customer for me 1 year. अकेला. They have a 5,000 crore outsourcing budget on high tech. तो वो फायदा होता है. बट एक निकला तो 100 करोड़ लेके भी निकल जाता है. B2C जो है वो इंडिया के अंदर, सॉरी आई थिंक आई क्लोज द अदर वन, आई एम सॉरी अबाउट इट. इंडिया के अंदर B2C का स्कोप ज्यादा लोग बोलते हैं बिकॉज स्मॉल टिकट साइज है, बिकता है. द डोमेन विच आई एम, द गाय व्हिच आई एम नॉट द गाय हु डज लाइक एप्लीकेशन साइड. मेरी वीकनेस का स्ट्रेंथ का है तो डीप टेक. इसीलिए टू मी नेचुरल चॉइस इज B2B. But B2C is good. I know Mukesh Bansal, Myntra, they're pretty close to us. We've done very good business in B2C. So both are good, but process remains the same. One more question. क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, उसमें था कि somebody hacked into all the cars in the parking lot and then they made an accident. तो जीप का हुआ था. तो उससे मतलब वो एक मूवी सीन और रियलिटी में अभी कितना डिफरेंस? नहीं वो हो जाता है. It can happen now. It can happen now. एक थोड़ा
और सबको ये पता है कि किसी की आईपी जो है जिसको भी पता है आपका यहाँ इंटरनेट सिक्योरिटी है वो नहीं, तो इसमें देखिए, you have to fix it yourself. You don't expect him or him to do that. You are the expert. देखिए, अब ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं. डोंट फील बैड अबाउट इट दैट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल. अब सांस लेने से कोरोना फैलता है, तो सांस लेना बंद करें क्या? नहीं ना, मास्क लगाएं, है ना. TCP/IP is open protocol designed in 60s. जब people used to trust and computers were in lab, उसका ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ. बट देयर आर मेनी वेज टू सिक्योर TCP/IP. जो IoT है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है या जो हम सिक्योरिटी देते हैं, इट इज इजी टू सिक्योर इट. ऑल इज रिक्वायर्ड इज दैट यू फॉलो द प्रोसेस. तो मैं वही बोलता हूँ कि देखिए, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज व्हाट यू हैव डिजाइन्ड इट. हैव यू डिजाइन्ड इट फॉर सिक्योरिटी? मे बी नॉट. But can you implement security? Yes. आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, मे बी लास्ट चीज. आई थिंक आई एम ओवर टाइम. बस 1 मिनट में दिखाता हूँ आप थोड़ा सा. देखिए, हम छोटी कंपनी है अभी, बट आई विल टेल यू व्हाट वी डू. जैसे ऐसा नहीं है कि हम पे अटैक नहीं होता है, हम पे मैसिव अटैक होता है. तो हमारा जो क्लाउड आर्किटेक्चर है टू प्रोटेक्ट माय कोड, बिकॉज हमारा एसेट क्या है? कोड ही तो है ना. और हमारे चीनी भाई भी हमारे उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने की बाकी लोग हैं. तो अभी जस्ट कम अप, वी इम्प्लीमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. आने दो इसको. तो व्हाट आई एम सेइंग इज थ्रेट इंटेलिजेंस इज अ फैक्ट. आपको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए. We implemented when we had 2 people company, I and Orko were working. Then only our threat intelligence was there. Who is observing us? Who is scanning my port? Who is looking at my IP? We know most of our threats. दिखाता हूं. और the best is, ये ऐसा नहीं कि इसमें $1 million खर्च होता है. It's about knowing it. जैसे हमारे लिए if you touch our system, जैसे सिस्टम को ही मैं थोड़ा सा साफ करूंगा, मतलब because I have lot of threads there, I'll clean it up. दिखाता हूँ आपको. तो हमारा जो क्लाउड है, ये मेरा क्लाउड है ना. ये तो लास्ट 1 आवर में नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा पुराना दिखाता हूँ डेटा. 30 डेज इसमें डेटा पड़ा हो. हाँ, वी मॉनिटर कि मेरा शोडन पे फुटप्रिंट क्या है. आपको शोडन दिखाया ना. हैकर आजकल कैसे अटैक करता है? जस्ट गिवन सिक्योरिटी साइड, वो जाता है, देखता अच्छा इस कंट्री पे अटैक करना है, मान लीजिए पटना पे अटैक. नुपुर शर्मा के साथ बहुत अटैक हुए इंडिया पे, अभी भी हो रहे हैं. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट. So they go to these websites which collect data. Then they find out what is the weakness. रेकी करना इसको बोलते हैं ना. Threat intelligence, open source intelligence करते हैं. तो we observe ourselves as a hacker that who is watching us. तो अभी मेरे ये लाइव है हमारा सिस्टम. हमारा स्टूडेंट पे कितना फुटप्रिंट है? तो ये हमारा एक कहते हैं हनी पॉट. जैसे हनी पॉट वो होता है जो अटैकर को एल्यूर करके दूसरी जगह ले जाता है. So he thinks he is hacking my system, but it's an empty system, junk system. So we know all this will be hacked back if we want to. We don't do that. So we have implemented all that when we were 2 people company, because we told ourselves that we are a security company. और ये तो लानत हो जाएगी कोई. तो ये लाइव हमारा चलता रहता है. और जो सतीश है, जो हमारा डेवलपर है, अभी से बुल्गारिया से हम पे लोग वॉच कर रहे हैं. तो वी हैव डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो करते हैं. कुछ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, इस लैपटॉप में चलेगा नहीं, है ना. वो डेट. तो ये आपको भी करना चाहिए. ठीक है, मेक सेंस? और पूछिए.
What next? Once we find out how many we have, how we Yeah, so there are ways. First, what happens is we prove that it is hacked because people are misusing it. So कर देता हूँ, कोई बात log off कर देता हूँ, है ना? Anyways, इसको मैं clean कर दूँगा, कोई बात नहीं. So what is important is we tell you that why this is hackable. That camera has weak password, or there's something called man in the middle attack, or there's a third video stream. So then we help you to fix it. So technically there are 2 runs in each cycle. First run with the problem, then fixing, then a clean run. The report has to give you a clean report. Then you as a business know that this is taken care. This is not for camera, it's for any device for that. Can God be it? Huh? God side. Which one God side? कौन सा use करते हो? Like you said, other device. So movie में बताइए. You can find anyone in the world. So कैसे? कैसे hack करते हो? That's like me who is into 25 years. So I'll ask you, hacking is a, जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ. No, I'm just telling you. तो जो मूवी में दिखाते हैं, जो कनेक्टेड डिवाइस है, इट कैन बी फाउंड. डिवाइस में होता है एक आईपी एड्रेस होता है, राइट? उसको तुम स्पूफ कर सकते हो, है ना? फिर उसका एक मैक एड्रेस होता है, फिर उसका फिंगरप्रिंटिंग के तरीके होते हैं. So if you build that, you can do that. So what I'm saying is, way we find devices, right? We can find out any hack device in the world today from our platform. But there is a huge algorithm in it. So we can find out, like I said, there was somebody in military. He was when the Afghanistan thing was going on, right? नहीं, मैं तुमको जो उनको बता दूं पहले. तो उनको पता लगा था कि एक हेलीकॉप्टर कब निकला रावलपिंडी से, तो उन्होंने कैमरा बता दो, तो उन्होंने बता दिया, तो हम उसको मॉनिटर में लगा दिए. जिस दिन निकला हम अलर्ट आ गया, हमने बता दिया. तो डिवाइसेस डोंट लाई, दे वर्क ऑन प्रोटोकॉल. मतलब आप मेरे से बोलो तो मैं झूठ बोल सकता हूँ ना, लेकिन अब कंप्यूटर में लॉगिन छोड़ दूं तो आप लॉगिन कर लो, उसको क्या अंतर पड़ता है? So once you know the nuances of protocol, once you know the device fingerprinting, find out. If it is a not connected device, you will not find it. If it is connected device, हाँ, उनको बोले वो you are saying. नहीं, तुम लोग तो इसमें काम करते नहीं हो, तो क्यों काम को समझ दिया? हाँ, बताइए. कैसे कैसे बोलो तो, मतलब क्या तुम्हारा वेब बेस्ड प्रोडक्ट है, क्या है, मैं बता दूं. हाँ, तो भाई तुम उसका क्या कहते हैं वीएपीटी कराओ. ओवास का जो वीएपीटी टॉप 10 क्लोज कराओ, नहीं करेगा, इतना आसान थोड़ी करते. हमारा कल करके दिखा. There are certain discussions we can do one-to-one. Yes. So, okay, this is the last question we are taking. ये 5 मिनट में बदल गया. तो वो जो उसका जो इसमें मेरे फोन में ना एक और सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता हूँ मैं नहीं बताऊंगा, बट इट चेंजेस द पासवर्ड. Very, very fast. Yeah, we are cyber. में ट्रस्ट कैसे आता है? बिकॉज़ बहुत सारे लोग वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आउटसाइड इंडिया, एंड आप जो वो इंडियन वो नहीं आते हैं इन टर्म्स ऑफ की उनकी सिक्योरिटी जो है साइड स्टेक को, मतलब मेरे कस्टमर्स की. So there is a very good question, by the way. So I was asked this question in Middle East, and then being an Indian, what's the best thing? Well, you guys are nicest people in the world. You are neither Israeli nor American nor Russian who steals data. Indian guys come, you'll never do danga badmashi in any country. They will do the work, come home, enjoy life.
So trust factor in Indian companies is highest, based on our culture, based on our history, based on the way our forefathers and our ancestors have behaved. What they doubt is, do you have the right technology? Because they still feel that we are technologically weak company, we are a service, IT service provider. वो हमको वो challenge होता है. We have to compete against armies, force scout, best in the world, and we do that. We debate them also many times. Sometimes we are equal, sometimes we lost. Fine. देखिए वही है, जब हम जिस जनरेशन में आए थे 1998, तो मेरे जीवन की तमन्ना थी कि मैं divyanshu@intel.com लिखूं या divyanshu, उसमें सन माइक्रोसिस्टम में कंपनी थी, तो आई वाज टू बी ऑड. आईआईटी से निकला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, बोले इस दोनों में काम करूंगा तो मैं बस बन गया, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट why not create another Intel or Sun, right? What's wrong? So my first startup I did one in 2003-04, but that time I lost my dad. तो मेरे को फिर तो मतलब I sold my equity to my co-founders और we made good money, and then I went to Bangalore. So मैं गुड़गांव में था, just came back from US that time. तो फर्स्ट स्टार्टअप वहाँ किया, उसके बाद फिर मैं चला के फिर मैं ब्रॉडकॉम, इंटेल, एरिक्सन में काम करता. बट दिस वाज देयर विद मी. आई वाजंट, मतलब दैट्स व्हाई आई चेंज एवरी थर्ड ईयर, आई चेंज अ जॉब. मन नहीं लग रहा, बहुत हो गया. आई जस्ट कैन नॉट कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी डे. सो दैट्स व्हाई. एज वगैरह देखो क्या है, मैं तुमको बताऊं, ये सब कंफ्यूजिंग डेटा है. यू शुड ऑलवेज सी दैट वर्ल्ड में मोबाइल पेमेंट सबसे अच्छा नाइजीरिया में होता है, बिकॉज वहां पे लोग हाथ काट लेके चले जाते हैं, कार्ड देख लीजिए. तो इट इज ऑलवेज ऑन नीड. आज के डेट में ग्लोबल पेमेंट में इंडिया नंबर 1 है, राइट? हमारे जो वैक्सीन पॉलिसीज हैं, जो सबको डेटा मतलब वी आर वन ऑफ द मोस्ट डिजिटली एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, नीड बेस्ड. ये डेटा हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में लिखा गया, विच आई नेवर ट्रस्टेड. And it happened in my career very early when I went to US. They told me nothing wrong. There's language called Visual Basic. I don't know if you guys know it. Microsoft language था, तो मैं बोला I am not going to do this GUI. I am a kernel guy. My own course is run in Linux kernel for a long time. I'll do this or not do that. So you have to fight your battle. वो डेटा बेटा उनके लिए इनको एनालिसिस का रिपोर्ट निकालना. हमारा काम है स्टार्टअप यार बना के बिजनेस मॉडल बनाना. That's all. If one is successful, we will be successful. मैं तो ऐसे भी उस जमाने में बिहार से हूँ जहाँ 18 घंटा बिजली नहीं आती थी. बट आईटी में जाना था अंदर क्या पड़ता है. So fight it out. That's where it is. You should, one thing I always say, place doesn't hold value today. It's internet that holds value. Idea holds value. बिजली है, सड़क है, पानी है, इंटरनेट है, खाना है, छत है, बाकी दुनिया कस्टमर है. अल्पतन थोड़ी कोई जानता था. कोविड में पढ़ा हुआ था मैं, कोविड हो गया कोविड में. मैंने एक मेल डाला, बोले कि दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, कैन वी सी द डेमो. बोले यस. डेमो कर दिया, इंडिया में बैठे बैठे डेमो किया. उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने CCTV.ai लॉन्च कर लिया. फिर बोले कैन यू कम टू दुबई. बोले यार पैसे लग जाएंगे. बोले ना विल स्पॉन्सर टिकट. चलो टिकट ले लेते हैं. तो फिर गए उनसे MOU में करके लोग आ गए. सो व्हाट आई लर्नड वाज nobody cares if the product is good. Nobody cares about we were 2 people company that time. I and Orko. That's all. Arun भी for time join नहीं किया था. Orko प्रोडक्ट बना रहा था, मैं बेच रहा. एक वेबसाइट था. That's all. अल्फोतेम का अगर मैं आपको फोटो दिखा दूं तो just to give you the perspective, so that one of the thing which I see, I'm sorry, ये इसका ब्राउजर चलाना है. एक मिनट. हाँ, तो करो. बन के नहीं यार. और टैब या है ना. हाँ, LFUTTAIM रेडिनेंट. हाँ, ये देखिए, ये फोटो है. इस आदमी की बिल्डिंग जो है वो 40 मंजिले की है. मेरा ऑफिस हमें घर से चल रहा था. इसको ये थोड़ा आप अगर पीछे जाएंगे तो ये दुनिया भर की जगह पे कवर हुआ है ना. ये हम लोग बैठे हुए हैं, ये मैं हूँ, ये और को है, ये अरुण है, देख रहे हैं ना. ये राजी हमदा है,
ये शरद है जो उनका प्रोग्राम मैनेजर था, ये मैं हूँ। ये इनका एक कन्वेंशन सेंटर है जो कि शायद इतना महंगा है, मैं बोला यार कहाँ बचा रही है यार। व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दे डोंट केयर। उस समय 3 लोग की कंपनी, अरुण घर से काम कर रहे हैं, मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ, और को अपने घर से काम कर रहा हूँ, ये कहानी। बट दे टोल्ड नो नो यू हैव टू कम, वी वांट टू टॉक अबाउट इट एवरीवेयर। सो वन मिथ आई नो यू नन ऑफ यू विल बिलीव इट, बट आई वांट टू कॉल इट आउट। अगर पटना में बैठे हो कमजोर मत होना। यू बिलीव इन 2-3 थिंग्स। प्रोडक्ट अच्छा है, बिकेगा, देयर इज समबडी, तो वो आप पहले ढूंढो। सेकंड, वॉक द स्ट्रीट एज यू ओन द स्ट्रीट। थर्ड, बी ट्रूथफुल। छोटे को बोलो हाँ यस व्हाट्स रॉन्ग, आई एम फ्रॉम पटना एंड आई हैव दिस ऑफिस, व्हाट्स रॉन्ग। अब तो आपके पास BHUB है, एक एड्रेस है, सच ए गुड प्लेस। बट माय होल थ्योरी इज दैट we don't need to talk to anybody if what we are not, and we make our point. Thank you. Mid session, I like to request to Mr. आज का जो सेशन एक लगता है कि ये सबसे अच्छा है, क्योंकि जो पहला साल जो है 365 दिन में क्या करना चाहिए, वो दिव्यांशु जी ने अपने 25 साल तक हमको लगता है मुश्किल से कम था। इन दिव्यांशु जी के और भी अनुभव का हम लोग फायदा उठाएंगे आने वाले समय में। दिव्यांशु जी के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि इतना बिजी रहते हुए भी अगर बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अगर कुछ भी जरूरत रहता है तो ये, या बिहार के लिए कुछ भी अगर, तो इनको बहुत पहले से जानते हैं। जिस समय ये इंटर में थे या और जगह काम कर रहे थे, तो हमेशा ये रेडी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी का। और हम चाहेंगे कि आगे भी अगर आप लोगों को इनसे भी कुछ अगर कहीं पे कुछ गाइडेंस लेने की जरूरत पड़े तो आप इनके साथ जो है शेयर कीजिएगा। हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि इनकी मेंटरशिप अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑनलाइन भी ले सकें या निकालेंगे रास्ता जैसे भी है। लेकिन ये हमारे BHUB के पार्ट हैं और हम लोग चूंकि ये इन्वेस्टर वाले के करे के बाद से भी जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे कम्युनिफाई से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को जो इन्वेस्टर कनेक्ट है उसमें भी दिव्यांशु जी का कहीं हम लोग मदद ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने बेहतरीन सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। मैं कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टोकन सेशन। थैंक यू। एंड मुझे तो भाई है Really a fantastic session.